नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। हेल्थ फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है। आज हम उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में लोग कम बातें करते हैं। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वर्तमान स्थिति, चुनौतियां और समाधान। बात प्रेगनेंसी रोकने के तरीकों पर हो या मेंस्ट्रुएशन पर यानी पीरियड पर, लोग बात करने से कतराते हैं। विषय से भागने से समस्या बढ़ती है और इसकी शिकार होती है महिलाएं। रूरल इंडिया में तो हालत और भी खराब है। जागरूकता का अभाव के बारे में दकियानुसी विचार बातें करते हैं। महिलाओं की कई स्वास्थ्य समस्याओं को सोशल स्टिग्मा का रूप दे दिया है। आज हम अपने विशेषज्ञों के माध्यम से उन लोगों को झकझोरने की कोशिश करेंगे जो जानकारी के अभाव में या कभी कभी जानबूझकर साधारण केस को गंभीर स्वास्थ्य समस्या बना देते हैं। हमारा ये शो अगले 3 घंटे तक YouTube और Facebook पर लाइव रहेगा। तो हमेशा की तरह सबसे पहले देखते हैं राउंड अप वीडियो। नमस्कार, हेल्थ फॉर ऑल में हम एक बार फिर हाजिर हैं नए एपिसोड के साथ। अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हर बार ये एक नए वेरिएंट के रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाता है। इस समय पूरा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में है। कल हो सकता है कोई नया वेरिएंट आ जाए। तो हमने सोचा कि अब अगर वेरिएंट के साथ ही हमें कोरोना के साथ ही जीना है तो क्यों ना कोविड मैनेजमेंट के तरीके से जान समझ लें। इसलिए हमने आज के एपिसोड का टॉपिक कोमॉर्बिडिटीज एंड कोविड मैनेजमेंट रखा है, जिसमें हमें अलग अलग फील्ड के डॉक्टर ये बताएंगे कि अगर आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो कोरोना होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। We have with us Dr. Pooja Pandey, a certified yoga expert, an expert in aerobics and Zumba, and runs Arogya Physiotherapy. She has been combining all these techniques for better living. She is the creative spirit behind her successful YouTube channel called Arogya Physio Tips. So today the topic for yoga is obesity for yoga. Okay, so very important thing to understand here is when we talk about obesity, we also have to talk about being lean. Okay, so I don't think so being lean or obesity is a disease. Not being fit in your body frame is a problem. You agree with me? Because at the end of the day, even if I am thin and I feel fatigue and I feel weak, okay, and I am only surviving on salad and not eating anything to give me energy, is also a problem. When you want to lose weight, you start with kriya. Okay, you start first, you clear your body for it to start losing weight. Every day eating rubbish creates so much toxins in our body. So first is clear the toxins. Okay, the second is yogasanas. In losing weight are the yogasanas, which are basically forward bending, because you are using your
abdominal muscles to forward bend. Okay, so it decreases the fat around the abdominal area. So if I do something called Paschimottanasana or if I do Naukasana, then it is definitely helpful. Now, when I say Naukasana, you need to perform, basically, you need to go down and then come up and hold, toes pointing towards yourself, and hold this pose for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You don't hold your breath in any of the yogasana. Okay, very important is you don't hold your breath. Now, another forward bending pose which we can do is Paschimottanasana, where I go down. You need to go down not from your back, from your hip. So you go down from your hip, try to go down as much as possible and hold this pose. Try to bend your elbow as much as possible. Hold this pose. Okay, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, and relax. So all the forward bending pose will help you lose weight. Today we have with us Dr. Amitabh Banerjee. Definitely, the sugar is the main culprit. Everybody knows, sir. But even carbohydrate in what we eat in our Indian diet is like, if you see the plate and the picture of Indian diet, forget about the American burger and all those diet chips and all. But even in Indian diet, sir, don't you think that the portion of rice, roti is much higher than vegetable and dal if you look at the overall plate? Whereas in Japanese or even in foreign countries, whenever we go in Europe or US or we travel and we eat at the restaurants, so we see that there's always a lot of emphasis in terms of the filling the plate with more vegetables and maybe beef or the chickens and everything, and less of bread or everything. Everywhere you start with some salad or some more rich veg. So is there any data available on this, that Indian diet Indians eat more carbohydrate compared to other countries? That's why that can be one of the reasons of imbalance in overall nutrition, sir. Yeah, you're perfectly right, Dr. Sadeep. Indian diets are high in cereals and it's like rice and wheat, which are almost 60-70% they get the calories from carbohydrate. So there is, of course, these carbohydrates are not very desirable, as you said, if you are having excess of carbohydrates, but they are less harmful than very rapid carbohydrates like sugar, maida. So if you take, multi-grain they take now, we combine it with bajra or wheat. They are also carbohydrates, but they do not have that sudden rise in blood sugar. Glycemic index is less, firstly. Secondly, as you said, the too much of rice, it is a matter of economics also. Poor people cannot afford too much of vegetables. Fruits are getting very costlier. So they cannot afford. So for them, the staple diet will be a bowl of rice or a big thali of rice. I have seen poor people eat it with some salt and water also, nothing else, because that they have to fill their year. But fortunately, what happens, the poor people, they are working more also. They are doing more physical activity. 6-7 घंटे वो काम करता है, तो उसका क्या होता है कि उसका कैलोरी इंटेक मैच हो जाता है. And awareness among the rich people, they can afford to have a variety of diets and cut down on carbohydrates. They can have fruits. They can have actually 5 helpings of fruits are recommended. Minimum 5 helpings, 35 gram in each helping. Almost this 5 helpings of fruits and lot of vegetables. So that gives a diversity. They say as much diversity in the diet and cutting down on the carbohydrate. Firstly, refined carbohydrate, and secondly, as you said, the other too much of rice, which can form the bulk of the year, can be unbalanced a little. But poor people cannot afford it. So we can have some consolation that they work it out. They do the physical activity, so the balance remains, and they can, if they are working in the fields, they may take some gajar or mooli or something. They take vegetables also. They may be munching, but that awareness can be increased. And the poor people can be told to grow their own vegetables, like kitchen garden, other things. So that way, it may be a matter of economics.
The Union Health Ministry has advised the COVID-19 patients to undergo tests for tuberculosis and other conditions if cough persists for more than 2 to 3 weeks. The ICMR has also listed active TB as a COVID-19 comorbid condition. Your comments? Yeah, so there are two things. Initially, also, when there was a cough persisting more than 2 weeks, we used to get our sputum examination done, the cough to be checked for tuberculosis. But during this COVID era, it has become very important for all of us to focus on this to have underlying tuberculosis. So you need to cross-check and be rest assured that there is no underlying tuberculosis within your system. Drowsiness in evenings is common among patients who have recovered from Omicron variant. It affects people in the 35 to 54 age group, while some doctors say that feeling of drowsiness in the evenings is a new sleep cycle-related symptom. Others say that energy levels peak during the afternoons and generally decline towards the evening. This process is probably accelerated for a person who has just recovered from COVID-19. See, earlier COVID, we have learned that there is a post-COVID syndrome, the long COVID syndrome. And this syndrome comprises of various features like weakness, not able to sleep properly, not able to eat, loss of appetite, hair loss. All these symptoms were very common after the post-COVID recovery. Now, with the variants, it is very difficult to pinpoint that Omicron is causing weakness in the evening only. So I believe this is a overestimation of the variants, symptoms. But I believe it's part of the post-COVID recovery syndrome, which happens with any viral illness or any other stressful illness and during the recovery period. And these syndromes, basically it's all about nourishment and nutrition. I have seen in my experience a lot of these patients, once you are giving them supplements properly like vitamin D3, calcium, and B complex, B12, omega-3 fatty acids, these patients respond wonderfully to these supplements. And these symptoms gradually wane. And sleep cycle definitely gets disturbed during the COVID because you are ill, you are not able to sleep properly, there are various symptoms. But you have to emphasize on the patients that they have to maintain their sleep cycle, and that's how you can get away by these symptoms. अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और वो दवा लेते हैं और दवा से उसको कंट्रोल में रखते हैं और उन्हें कोविड इन्फेक्शन होता है, तो ये कितना खतरनाक है कि कई लोगों में ये देखा गया है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, बीपी की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कोविड इन्फेक्शन के बाद जब वो ठीक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उसके बाद उनको हाई बीपी होने लगता है। तो ये समस्या क्या टेम्पररी है या फिर उनको दवा पे मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा? देखिए सर, इसमें क्या है कि जिस पेशेंट को पहले से बीपी है और बीपी की मेडिसिन रेगुलर ले रहा है और वो कंट्रोल चल रहा है, उसको सडनली पता चलता है कि कोविड है, फीवर है। उस फीवर में अर्ली स्टेज जो रहती है, जिस टाइम पे फेब्राइल इलनेस स्टार्ट है, उस टाइम पे ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएट टू द लोअर साइड। तो जो पब्लिक को मेरा मैसेज ये रहेगा कि जो पेशेंट ऑलरेडी बीपी की दवाइयां ले रहा है, उसको कोविड इन्फेक्शन हुआ अर्ली स्टेज में, तो बीपी मॉनिटरिंग इज द फर्स्ट पॉइंट। इफ रिक्वायर्ड द बीपी मेडिसिन डोज शुड बी रिड्यूस्ड in the early phase, and after that when the recovery start, then again the blood pressure may shoot over the level which is he prevented by the same medicine. Just then that time may require the increased dose of the medicine. So during this COVID illness, the patient should monitor the blood pressure from the starting of the illness to the recovery, and may after for 3 months also. Because after this viral illness, then hypercoagulable stage will go on proceed in the body that may increase the blood pressure by the sympathetic overdrive also. So blood pressure management requires the BP monitoring from starting of the illness till the recovery and post-recovery 3 to 6 months. Now, a new study by AIIMS in New Delhi says that unlike during the earlier surge of pandemic, surgeries are safe and not associated with higher chances of complications or deaths in those with Omicron variant. The Union government has also endorsed this view and said patients should not be denied surgery. Yes, this is absolutely true. This is
mostly because of the change in the virulence of the Omicron variant this time. So the earlier COVID variant were much more seriously causing the disease, and we really didn't know how this COVID is going to evolve, what is going to be the various manifestations. And in fact, in the first wave, just before the first wave, it was very difficult to even know what is going to be the treatment strategy for such patients. Slowly, of course, we evolved into this is how the patients need to be managed, but still the severity of the disease was not known, and that is why during the second wave, it was only during this around first and second, only the emergency surgeries were performed. The elective procedures were all delayed. Why this was done was, first of all, it would result in again transmission of infection to patients who do not have COVID-19, and in case they develop COVID-19, then again the complications are going to be more. This was also because if suppose the patient develops COVID-19, then he goes into the COVID-19 ward, ICU, where the kind of care is going to be a little more different. So in the earlier waves or with the earlier variants, yes, only emergency surgeries. But now with the Omicron variant, definitely we can perform the routine procedures as well, because the risk of transmission, although is high, but it is definitely resulting in a mild disease, and most of the patients are not needing steroids until and unless there is a comorbidity. अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है और वो नियंत्रण में है, वो एक्सरसाइज करते हैं और सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, नियंत्रण में है, और उनको कोविड इन्फेक्शन होता है, तो वो कितना फेटल होता है? टाइप 2 डायबिटीज अगर नियंत्रण में है तो जनरली वो कंडीशन जिस कंडीशंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज नियंत्रण के बाहर जाती है, जैसे कि मोटापा, स्ट्रेस, अनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल, तो नियंत्रण में अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो इसका ये मतलब है कि उस आदमी का स्ट्रेस लेवल मोस्टली कंट्रोल में है, वो आदमी मोटापे से थोड़ा सा दूर है, उसका बाकी न्यूट्रिशन वगैरह ठीक चल रहा है। तो इन कंडीशंस के अंदर अगर HbA1c जो हम मॉनिटर करते हैं, जो कि डायबिटीज़ के बारे में बताता है कि वो वेल कंट्रोल्ड है कि नहीं है, 6.5 के ऊपर जैसे HbA1c होता है तो उसको डायबिटीज़ होता है, अगर 8 के नीचे HbA1c है तो कंट्रोल बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर टाइप 2 डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि कोविड के सिवियरिटी वगैरह उन मरीजों में देखी जाए।
Good morning and welcome back. I am Shankar Raj, the moderator of this particular session. And let me remind our viewers that we are live on Facebook and YouTube. So we start this session on yoga, and we have with us Dr. Pooja Pandey, a certified yoga teacher, an expert in creative spirit behind her successful YouTube channel called Arogya Physio Tips. She'll be demonstrating asanas for patients with PCOS or Polycystic Ovary Syndrome and PCOD or Polycystic Ovary Disorder. Over to you, Dr. Pandey, and welcome. Thank you so much. Really feel great to be back again. Okay, PCOS is my favorite topic. मेरा बहुत ही favorite topic है. क्यों है? क्योंकि मैं खुद PCOS से बहुत सालों तक सफर की हूँ. मेरी जर्नी टीनेजर टाइम से शुरू हुई और I think I have won the war against PCOS. Very, very important. So I will definitely show you poses for yoga, which is my topic for PCOS. पर बहुत ही ज़्यादा important क्या है कि आप consistent रहें. ओके अगर आप PCOS में कंसिस्टेंट नहीं है तो मतलब जीतना PCOS के अगेंस्ट, मैं जीतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट अ वॉर. ओके एंड एनीबडी हु इज सफरिंग फ्रॉम इट विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम सेइंग. ओके नाउ व्हाट इज द 5 थिंग्स व्हिच इज डेफिनेटली very important for PCOS. Teenagers are suffering from it, young mothers are suffering from it, people see. I help a lot of people with PCOS. So this is one of my very passionate topic. Okay, so I will be talking every aspect of PCOS. So one very important thing is sleeping on time. If you are not sleeping on time, you cannot win your war against PCOS. So there is 8 hours of undisturbed sleep needed. So you need to sleep by 10, 11. Why? Because your body is like a cycle, and anyways the cycle is disturbed, the hormonal cycle is disturbed. If you want synchrony, you have to first bring your body into balance. Okay, so the first thing is your 8 hours of sleep without disturbance. Okay, the second very important point is how much ever weight you are, you need to hydrate yourself that much. So if you are 1 kg, you need to 20 kg, you need to have 1 liter of water. अगर आप 20 kg के हैं तो आपको 1 लीटर पानी पीना ही पीना है. तो अगर आप 80 kg के हैं तो आपको 4 लीटर पानी पीना है. PCOS आप जीत ही नहीं सकते अगर आप हाइड्रेट नहीं करते. ठीक है. थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप टाइम पे खाना खा रहे हैं. आपका टाइम मेंटेन होना चाहिए. अगर आप 8 से 8:30 के बीच में ब्रेकफास्ट करते हैं तो 9 से 9:30 नहीं करिए. आप 8 से 8:30 के बीच में ब्रेकफास्ट करिए. अगर आप 1 से 1:30 के बीच में करते हैं तो 2:30 मत करिए. ओके, सो कंसिस्टेंसी, द बॉडी शुड गेट यूज्ड टू हैविंग थिंग्स एट सेम टाइम एवरी सिंगल डे. डिनर अर्ली करिए अगर आपको PCOS है. जनरली PCOS एक विशियस साइकिल होता है. तो PCOS होता है, PCOS की वजह से थायराइड होता है, थायराइड की वजह से डायबिटीज होता है, और ये साइकिल चलता ही रहता है, घूमता ही रहता है. तो अगर आपको इस साइकिल से निकलना है तो रात को डिनर अर्ली करिए. विद इन 7-7:30 आपका डिनर हो जाना चाहिए. तो खाना ठीक खाना है, पानी अच्छे से पीना है, सोना है. चौथी जो जिस चीज के लिए मैं हाजिर हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सरसाइज करना है. नॉट ओनली योगा. PCOS अगर आप ठीक होना चाहते हैं so it is very, very important that you do a mixed exercise. Only yoga won't help, only cardio won't help. Okay, there are 5 exercises which I definitely recommend, and I tell people to mix it. First and foremost is cardio. अगर मैं बोलती हूँ कि कार्डियो एक्सरसाइजेस क्या है, तो कार्डियो एक्सरसाइजेस है वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, को इवन आप सूर्य नमस्कार भी अगर फास्ट पेस पे कर रहे हैं तो वो भी एक कार्डियो एक्सरसाइज. कार्डियो एक्सरसाइज वो है जिसमें आपका हार्ट बीट बढ़ता है, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ती है और आपको पसीना आता है. ओके, सो दोज आर जनरली कार्डियो एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस.
30 minutes, 30 minutes of cardio endurance exercises is absolutely necessary for a PCOS woman, at least 5 days in a week. 5 दिन आपको हर दिन 30 मिनट तो स्वेट करना ही करना है, चाहे वो डांसिंग से हो, चाहे कुछ भी हो. मैं एक प्रोग्राम करती हूँ जिसको वॉली बुलाते हैं, अराउंड 100-150 विमेन वो करती है, और एटलीस्ट आज तक मैंने 40-45 women I have treated through completely non-traditional, no medication at all. Okay. So it's very important that you should be consistent. It may take 6 months, it may take a year, it may take 2 years, but you will get better and better and better. So second, जो important exercise है उसको बोलते हैं interval training, HIIT, high intensity interval training. Now high so हम basically I am just squatting, okay, for 1 minute I will be squatting, okay, and then I will take a break of say 30 seconds, and then I will maybe do a plank hold for 1 minute, okay. So basically 5-6 exercises आप पकड़ लीजिए, proper warm up करिए, proper cool down करिए, और ये 5-6 एक्सरसाइजेस, हर एक एक्सरसाइज 1-1 मिनट 45 सेकेंड, 15 सेकेंड का ग्रेप, फिर से ऐसा आप 30 मिनट्स तक करिए. ये बहुत ही टायरिंग होता है बट वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर PCOS. ओके, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग. थर्ड जो बहुत ही इफेक्टिव होता है वो है योगा. मैं आपको कम से कम 10 पोजेस ऑफ योगा बताऊंगी, 10 पोजेस ऑफ योगा टू हेल्प यू. But always remember, just this pose will not help you. As I am telling you, it is very very important to sweat. आपका sweat करना बहुत ही important है PCOS में. Okay. Fourth, very important training which is required is at least 2 to 3 days in a week is your weight training or strengthening. बहुत important है. अगर आप weight training नहीं कर रहे हैं तो आप calisthenics कर सकते हैं. Now what is calisthenics? जिसमें आप खुद का बॉडी वेट यूज कर सकते हैं. तो जैसे प्लैंक हो गया या स्क्वाट्स हो गया जिसमें आप खुद का बॉडी वेट यूज करें. अगर आप वो नहीं कर सकते, आपका वजन ज्यादा है और आपको स्क्वाट करने में घुटने का दर्द होता है या फिर प्लैंक करने में शोल्डर्स का दर्द होता है, तो आपको क्या करना है कि आपको 1 kg डंबल से स्टार्ट करना है. आप 1 kg डंबल से स्टार्ट करिए. स्ट्रेंथनिंग करना एवरी वीक, ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक. कितना मिनट? At least 15 minutes to 30 minutes. आपके पास जितना समय है आप उसके हिसाब से. Fifth, जो बहुत important, I can't say exercise, but yes, breathing exercise is very important. Now, why breathing exercise or pranayam is very very important in PCOS? क्योंकि PCOS में hormonal imbalance होता है. There is lot of stress, anxiety, mental disturbance which is associated with PCOS. Especially people with teenagers, they feel very uneasy when they are not getting periods, okay, and the periods are never on time, so there is lot of hormonal imbalance happening. तो उसके लिए आपको प्राणायाम जरूर करना है. that will help you calm down. Also meditation will help you. तो अब हम चालू करते हैं. I'll start with 10 poses of yoga, okay, but I'm very passionate about PCOS, so if you give your 100%, I am a successful story. I was told I won't be able to conceive without certain treatment like IVF and all that. I have 2 children, 2 healthy children, and my periods have become regular. So I'm telling you my own story. I'm not telling you कि हाँ मैं ये डॉक्टर हूँ, मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ. मैंने ये चीज किया है. मेरे को ऑलमोस्ट 10 साल लगे टू हैव रेगुलर पीरियड्स, बट 10 साल लगे और मैं 10 साल तक लगी रही. और मैं मतलब आई डोंट हैव थायराइड, आई डोंट हैव डायबिटीज, आई डिड नॉट गेट एनीथिंग रिलेटेड विद PCOS एंड आई वाज बोर्न विद PCOS. PCOS 2 टाइप के होते हैं. एक, आप जेनेटिकली बोर्न विद इट, ओके. तो as you get the periods, it's always irregular, okay. दूसरा PCOS होता है जो आप अपने लाइफस्टाइल से, especially the teenager, young youth, they are not sleeping in the night, they are eating junk food,
which will completely cause a hormonal imbalance. Okay, आपका testosterone basically ज़्यादा हो जाता है during PCOS, so you even get hair growth and all that. So it is very very important that आप अपना lifestyle change करें, because अगर आपका lifestyle oriented PCOS है तो वो anyways अगर आपने 6 महीने भी change कर लिया तो you will start seeing the result. Genetic, if you are born with PCOS, then it will take some time to go. But if you don't give up, you can actually win. Huh? So don't give up. Don't. Okay. Now, the first pose which we are doing is butterfly pose, which is very, 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 very good for PCOS. Now, what is butterfly pose? We basically bring the right leg towards the left thigh. Okay. And bring the left leg towards the right thigh. Bring both the ankles together, heel together, toes together. Knees apart. Okay, butterfly भी बोलते हैं इसको. आप थोड़ा सा loosen up करिए groin area को. आपका pelvic health बहुत important है PCOS में, तो pelvis को expand करिए. जितना आप expand कर सकते हैं उतना. Okay, breathe in, breathe out. You go as down as possible and hold this pose. Hold it. Okay, you can hold for 20 seconds, you can hold for 10 seconds. Now, very, very important in butterfly pose when you are doing is, you don't do this, you don't do this, you don't, you don't bend your back, you bend from hip. I will show you from the side. So when I go to the side, you see my back is straight, okay? And I bend from the hip, my back is straight throughout. So don't do this don't do, okay? Your back is straight and you bend from hip as much as possible and hold this pose. Don't hold the breathing. Keep breathing in and out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Okay. Again, you can loosen up. Again, you go back. How many times should you do it? I think 5 to 8 times every time you do it. So you can even, repeat in the morning and then again in the evening as you wish. Okay. So that is your butterfly pose or Baddha Konasana. Okay. Supta Baddha Konasana. Now the same pose in sleeping, if you do, that is also very, very effective. But we'll do that later. The second exercise which we'll do is Churning pose. Okay. Both the legs as apart as possible. Toes pointing towards yourself. Okay. Toes pointing towards yourself. You go, breathe in, breathe out. You go all the way to the side. Go all the way to the side. Go back. Okay. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Okay. And then the opposite. Go. Chakki piecing, piecing, piecing. Dharmendra. Just remember that. Okay. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Again, आप देखेंगे कि इसमें we have expanded the legs so that there is a stretch here. Okay. Always remember, again, I'm telling you that only these poses will not be sufficient. You have to mix your exercise protocol. Very, very important. Okay. So that was churning. How many times you should do it? Clockwise 15 times, anti-clockwise 15 times. Of course, अगर आप ज़्यादा repetition कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है. But you have to listen to your body. तो आपका body जितना allow कर रहा है, आप उतना करिए, धीरे 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 करिए. ठीक है. The third which I told is Supta Baddha Konasana. Supta Baddha Konasana, as I said, is while sleeping down. So you basically you come in the side pose, you bring both the legs together. Okay. So both the legs is in butterfly pose and slowly you go down on your elbow. Okay. On your elbow. Huh? And try to take your head as back as possible. Keep breathing in and out. Relax. Relaxing your muscles. So don't tense your muscles. Relax. Relax as much as possible. If you cannot keep your chest, up, you can even bring it down and just be in this pose as much as possible. Okay. Keep breathing in and out. Relax these muscles.
very important is to relax here. Okay, keep breathing in and out. Don't tense your muscle. Relax. Okay. The next, so Supta Baddha Konasana, you can do with chest extended. So you basically do a Supta Baddha Konasana with fish pose like that, or you just do the Supta Baddha Konasana with your hands out and relax and be in this position for 2 minutes, 3 minutes, like that. Okay, as much as you can. Okay, both the knees out and both the groin area completely relaxed. Don't tense your back, relaxing your back completely. Okay, so that's your third pose. The fourth pose is Shalabhasana. Shalabhasana, you lie down on your tummy. Okay, आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे. पेट के बल लेट के आप हाथों को ग्रॉइन एरिया के पास, which is basically ये एरिया, आप दोनों हाथों को यहाँ पे रखेंगे. ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, कम अप, कीप ब्रीदिंग इन एंड आउट, होल्ड दिस पोज. होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Okay, we'll do it one more time. Let's do it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Okay, next pose जो आप कर सकते हैं वो है सुपरमैन पोज. ओके, सुपरमैन पोज के लिए दोनों हाथ और दोनों लेग्स आप ऊपर उठाएंगे. आपका घुटना मुड़ेगा नहीं, आपकी एल्बो मुड़ेगा नहीं. ओके, सो both hands and legs straight and we will come up. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Okay, that's your repetition of Superman pose. You can also hold the Superman pose. So hold it up and keep breathing in and out. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Okay, so that's your fifth pose. The sixth pose is Dhanurasana. Okay, or the bow pose. For Dhanurasana, your knee should be coming towards your buttocks. For example, you have knee pain and your knees does not reach towards your buttocks. What should you do? You will just put your knee as much as possible and you will put your hands back and hold this pose for 10 seconds, 15 seconds, whatever time. Okay. If you are comfortable, you don't have any problem in your knee, bring your ankle towards your hip. Okay. First hold your right ankle, then hold your left ankle. Breathe in, come up and hold it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Again, I told you, if you cannot hold it, then your hands will be here, legs will be there, and you will try to come up as much as possible. Okay, that's Dhanurasana. So that's your sixth pose. The seventh pose, cat and camel. Okay, cat and camel is basically on all four. Breathe in, go all the way up, breathe out. Completely roll yourself. Squeeze your tummy in. Okay, very, very important in this. Squeeze your tummy in, your navel button. Okay, breathe in, ऊपर ले जाइए सर को. Breathe out, आप अपने abdominal muscles को जितना हो सके उतना contract करें. Breathe in, breathe out. Okay, so do again 10 to 15 repetition of this pose. Okay, the next is bird and dog. Okay, bird and dog क्या होता है? Breathe in, हाथ भी आपका आगे जाएगा, पैर भी पीछे जाएगा. Breathe out, you bring your elbow and knees together. Breathe in,
breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. दूसरी तरफ करना भी बहुत जरूरी है, एक तरफ नहीं करेंगे, दूसरी तरफ. Breathe in, breathe out. In, out. In, out. Okay? So that's your 7th pose, I guess. Your 8th pose, okay? 8th pose we will do in, I think one is side twisting pose. So basically, so how you will twist. If you have pain in your knees and you cannot take your leg towards the opposite side because this part is tight, then what you can do is just sit in Sukhasana and twist, okay? Spine twist, okay? So you just sit in Sukhasana and twist. If you are comfortable, then you bring your left leg forward, your right leg cross towards the left leg, okay? Your left hand holding your right leg and you look at your right hand, okay? And be in this pose. Very important is one straight line of shoulder, okay? Be in this pose 10 seconds and then do it on the other side. Now again, very important in this is your spine has to be straight. You are not twisted like this. Your spine straight and you twist like this, okay? So your shoulders are straight, your spine is just twisting from spine, not from your back, okay? So don't ever slouch, okay? That is very, very important. The next pose is in standing, which is basically the forward bending pose, okay? How do you do that? You take your legs as apart as possible. Let's just stand up. Okay. So in standing up, my legs is as apart as possible. Toes pointing out, toes not pointing in, toes pointing slightly out, okay? Breathe in, breathe out. I come down from the hip. My back is straight. I come down from the hip and try to go as down as possible. Okay. If you are only comfortable here, you will be here and breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. If you are comfortable, then bend your elbow. Breathe in, breathe out, bend your elbow. Keep breathing in and out. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. And slowly get up. How much time you should do it? 10-second hold, 15-second hold. You can do 3 to 5 repetition. Okay. Then bring your legs as much in as possible. Okay. The next is the last one, 10th one, is the chair pose. How do you do this? Hip, knee, ankle in one straight line. Hip, knee, ankle in one straight line. Take your hip back. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. You can even hold the pose, which is keep holding, don't hold your breath. 1, 2, or taking the hands in the front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and relax. Okay. So these poses, these 10 poses which I performed are really, really good for PCOS. Okay. What all did I do? Let's do just a recap. The first is Buddha Konasana, then Supta Buddha Konasana, then Churning, clockwise, anti-clockwise. Then I did Superman, both hands and leg up. Then the Shalabhasana, in which I put my hand in the groin area and I came up. Dhanurasana, bow pose. Then I went back and did cat and camel. I did bird and dog, forward bending. And the last one which I did was chair pose. Now, as I said, that it is very important to do breathing exercise for PCOS.
You need to do 3 pranayama from yoga point. Is Kapalbhati. The other one is Nadi Shodhan Pranayam, and the third one is Brahmari, which I've already demonstrated many times in the program. Okay, but just for your information, Kapalbhati is normal inspiration, forced expiration. So normal, forced, normal, forced, normal, forced, normal, forced, normal, forced. So this is Kapalbhati. You're inspiring from one nose, expiring from the other, inspiring from, expiring from the other. This is Nadi Shodhan or Alolom Vilom. And Brahmari is basically buzz breathing. So you can just put your fingers here or thumb here and okay. How many times you should do it? Kapalbhati minimum 60 times. Okay, so 20 break, 20 break, 20. You can even do more, but 20 break, 20 break, 20. The second one, which is Nadi Shodhan, you should do it for 2 to 3 minutes. Okay, don't count. Just do it for 2 to 3 minutes. Then the third one, which is Brahmari, you should do 8 to 10 breaths. Okay. Apart from that, I have told you, meditate, keep cool, keep calm, be consistent. You know, 3 C's are very, very important in PCOS. That's cool, calm, and consistency. If these 3 C's are conquered, no, I'll tell you, you can, win your war against PCOS. So thank you so much. Thank you, Dr. Pooja. It was a wonderful session, as usual. I'll ask my co-moderator, Kishore, to ask a couple of questions. Yes. Thank you, Mr. Shankar. नमस्कार, डॉक्टर पूजा पांडे. नमस्ते, नमस्ते. आपने बताया कि कई मामलों में PCOS जेनेटिक होते हैं. हाँ. क्या ऐसे मामले प्रिवेंटिव होते हैं और क्या ऐसे मामले योगासन से क्योर हो सकते हैं? मैं बेसिकली नो आई डोंट से कि मतलब जेनेटिक मतलब डीएनए से रिलेटेड है. The mother had PCOS, so the daughter is also has chances of having PCOS. Okay, तो मेरे को तो जेनेटिक ही था और मुझे क्योर हुआ. राइट, आई वाज बोर्न विद PCOS. मेरे को बोलते थे कि इसको साल में 4 बार पीरियड्स आते हैं और उसके मैंने 2 बच्चे किए हैं, तो मेरे PCOS डेफिनेटली क्योर्ड है, एंड ओनली थ्रू योगा, थ्रू एक्सरसाइजेस एंड एवरीथिंग. PCOS anymore. और प्रिवेंटिव भी होते हैं. यस. अगर आपको PCOS है नहीं तो मतलब आप बेसिकली अगर यंग बच्चा है और आपका लाइफस्टाइल है तो PCOS आएगा नहीं. जनरली अगर आपको आया नहीं है तो नहीं आएगा. आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ है तो बहुत PCOS आने के चांसेस है. तो लाइफस्टाइल पे बहुत कुछ निर्भर करता है. बहुत ज्यादा. डॉक्टर पूजा, वर्किंग गर्ल्स के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी समस्या है. उनके लिए क्या सुझाव है कि कम समय में ज्यादा फायदा ले सके वो योगासन से? तो मैं बोलती हूँ कि आप जितना समय अपने शरीर को देना चाहेंगे, आपका शरीर उससे 4 टाइम ज्यादा आपको मुनाफा देगा. ओके, अगर आप 1 घंटा करेंगे एक्सरसाइज तो आपको पूरा दिन टायरिंग नहीं लगेगा. ओके, विच इज लाइक 23 आवर्स. और अगर एक घंटा भी आप दे नहीं सकते अपने उसको और आपको पैसा ही कमाना है तो पैसा ही कमाइए और फिर उसको हॉस्पिटल बिल्स में भरिए. मेरे लिए ऑप्शन नहीं है 15 मिनट की एक्सरसाइज बताइए, ऑप्शन नहीं है. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आप हर रोज मैगी खाइए तो क्या होगा? 2 मिनट में मैगी बन जाती है तो क्या होगा? शरीर बर्बाद हो जाएगा. मैदा जा रहा है, कुछ न्यूट्रिशन. तो आप 1 दिन कर सकते हैं 15 मिनट, आप 2 दिन कर सकते हैं, आप 10 दिन कर सकते हैं. आप बीमार है तो नहीं करिए, पर जब आप कंसिस्टेंट होना चाहते हैं तो आपको घंटा भर तो अपने शरीर को देना ही चाहिए. मैं 2.5 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, बीइंग अ वर्किंग मदर, 2 चिल्ड्रन. ओके, तो हर कोई वर्किंग women can definitely exercise. They don't realize it. बहाना होता है. मैं बोलती हूँ exercise is 40. You can't avoid it and it cleanses you. Okay, you have to think like that. अभी आप शादी कर रहे हैं,
आपको पॉटी आई तो आप पंडित को रोक के आप जाएंगे, राइट? तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, क्योंकि वो हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकता है। अपने मतलब कहने का मतलब है कि इसमें कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। शॉर्टकट कोई भी तरीका नहीं है। अच्छा डॉक्टर पूजा पांडे, आपने अभी कहा और देखा भी जाता है कि यंग गर्ल्स में शादी के बाद कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर नहीं करते हैं। तो क्या ये सिर्फ पीसीओएस की वजह से होता है या पीसीओएस के सारे केसेस में ऐसे होते हैं? नहीं नहीं, तो क्यों नहीं कंसीव कर पाते हैं? वन, देयर इज अ प्रॉब्लम इन यूटरस। सेकेंड, देयर इज प्रॉब्लम इन ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अगर वो सब प्रॉब्लम है तो आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, हु विल हेल्प यू करेक्टिंग इट। ओके, पर अगर ये आपका स्ट्रेस, आजकल स्ट्रेस की वजह से लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं, आपने कभी ये पहले नहीं सुना होगा, बट स्ट्रेस रिलेटेड इनफर्टिलिटी इज वेरी वेरी हाई। और उन जिनको भी स्ट्रेस रिलेटेड इनफर्टिलिटी होता है कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे डांस करिए और रेगुलर बेसिस पे कोर एक्सरसाइज करिए और रेगुलर बेसिस पे ब्रीदिंग करिए और 6 महीने बाद मोस्ट ऑफ द विमेन कंसीव। जो 5वां जो मैं बोल रही हूँ वो है पीसीओएस, जिसकी वजह से लोग कंसीव नहीं कर पाते। उसके लिए क्या करना है कि अगर आपको पता है कि आपको पीसीओएस है, आप कम से कम अपने आप को 6 महीना से 1 साल देना है। महीना नहीं, 6 दिन नहीं, 6 महीना से 1 साल, क्योंकि आपको पूरी हार्मोन साइकिल को बैलेंस करना है। तो उसको फिर एक्सरसाइज करते 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 दे गेट बेटर। अगर लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है, आपने लाइफस्टाइल को अच्छा किया, ऑटोमेटिकली आपका पीसीओएस कम हो जाएगा, है ना? तो इस पीसीओएस रिलेटेड इनफर्टिलिटी भी बहुत लोगों को होती है, कई लोगों को नहीं भी होती है। मेरे को मतलब कई लोगों को इतना माइल्ड पीसीओएस होता है कि वो कंसीव कर पाते हैं, बट देयर आर मेनी हु कांट कंसीव। तो उनको बेसिकली एक्सरसाइज करना चाहिए एंड दे कैन कंसीव। ये पीसीओएस और पीसीओडी में क्या फर्क है? तो पीसीओएस है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो अभी आपको डायग्नोज हुआ है। पीसीओडी है कि मतलब मैं तो आई एम born and brought up with PCOD, समझ गए? मतलब मुझे सालों साल से, मैं 10 साल से PCOS पेशेंट नहीं होंगी, फिर मैं PCOD हो जाऊंगी, कि मतलब मेरे को एस्टैब्लिश्ड केस ऑफ PCOS है, तो वो डिसऑर्डर हो चुका है। मतलब सब कुछ उल्टा, मैंने बोला ना आपको PCOS की वजह से थायराइड आ जाएगा, थायराइड की वजह से डायबिटीज आ जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, इतना मतलब एक के बाद आते रहता है। ठीक है, तो अगर आपने पीसीओएस को कर्व कर दिया, जैसे मुझे पता था, बचपन से पता था कि मतलब जब बचपन मतलब मैं अपने टीनेजर टाइम से बता रही हूँ कि मुझे पता था कि मेरे को PCOS है, तो आई मेड श्योर कि आई वाज वेरी वेरी एक्टिव किड। इवन माय कॉलेज डेज व्हेन आई यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स, आई यूज्ड टू गेट अप एट 5 o'clock एंड गो फॉर रनिंग। तो उससे मेरा पीसीओएस हमेशा कंट्रोल्ड रहा, बट इट बिकेम पीसीओडी बिकॉज I was consistently a PCOS patient. Okay, तो इसलिए अगर बहुत टाइम तक डिसऑर्डर रहता है तो उसको डिसऑर्डर बोलते हैं, अगर जब डायग्नोज होता है तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो पीसीओएस सीनियर हो जाता है तो पीसीओडी हो जाता है। यस, बहुत सही बोला। बहुत धन्यवाद पूजा जी। हमने हील फाउंडेशन ने एक नया वीकली शो शुरू किया है जिसका नाम है योग मंत्र। ओके, और उसमें हम जैसे आपने जो कुछ बताया उसके अच्छे अंश निकालेंगे सवाल जवाब के साथ, और वीकली शो के रूप में हम उसको पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू मिस्टर शंकर। Thank you, Kishore. Before I leave you, Dr. Pooja, I just have a couple of questions. One is, can women who are on their menstrual cycle do this yoga exercise? For example, all the exercises, there are different kind of women. Okay, one, women who have extreme pain during their periods. Okay, first is, period is not a condition, it's not a problem. Okay, it is basically a physiological process. For me to convince a woman to exercise during periods is a very very big task, but I am telling you, if you exercise during your periods, your pain reduces, your cycles become regular. It is always plus point to exercise during period. Okay, so one is you have to convince the women slowly. Okay, next,
there are women who has lot of pain on stomach during, they have abdominal cramps. So doing Dhanurasana and all will be difficult, but they can definitely do Buddha Konasana or Supta Buddha Konasana or milk churning, all that they can do. But maybe lying down on the tummy, they will find difficult. They will all the exercises in which we have to raise the legs. Okay. So only those exercises apart, they can actually, I take classes during my own period. So it's absolutely safe. And the second question that I had was, you said the PCOD is connected with thyroid is connected with the hormonal problems, then weight gain. So people who are obese, can they do all this asana? For example, the last asana you showed where you had this legs apart and coming down, and the milk churning also. Yes, absolutely. See, first of all, I have told this before also, I'm telling you now also, flexibility has nothing to do with your obesity. Okay, it's mind. Okay, it's the mind game which plays on you. You are like, I am 100 kg, I can't do this. Okay, I can show you 100 kg in so many talent show in which there are such fat people and they do dance like divas. Okay, so it has nothing to do with your, yes, if you develop, for example, arthritis due to your obesity, okay, then you will have problem doing this. Then it is a very big task. Then you may have to go, instead of doing this, you have to do cycling, a static cycle. You have to start with that. Okay, then you have to go for a lot of, maybe a nutritionist will tell you to first reduce weight so that you can do these exercises. Well, thank you very much. It was wonderful having you. I think, as usual, very, very informative. And as what Kishore said, we will be editing slightly this and giving it in a capsule form because you are highly popular on the yoga show. So we will be playing it every week. Thank you very much. And it was wonderful having you. And ahead of this, wishing you a very happy Valentine's Day. Love yourself is my mantra. So yes, if you love yourself, spend time with yourself through exercise and your breath. We not only love ourselves, but we love your show also. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We now move on to the session intro video.
We now have quiz number 1. Yes, it's quiz time now, and the first quiz is: which of the following yoga poses are especially beneficial for management of PCOS? And the question and the options are: A, bridge pose or Setu Bandhanasana; B, sun salutations or Surya Namaskara; C, boat pose or Naukashana; and D, all the above. The answers would be given at the end of the session. We now have short capsules on health resolutions by our experts. On to health resolutions. तो अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो वी कैन अवॉइड द इन्फेक्शन, और वो इम्यूनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर बॉडीज पावर टू फाइट द डिजीजेस। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो आहार और विहार है, कि जो हम खाना खाते हैं वहीं से सब चीज़ इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है। अगर हम खाना प्रॉपर टाइम से खाएंगे, प्रॉपर मात्रा में खाएंगे, और जो पूरा प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाएगा हमारा खाना, तो उससे हमारे शरीर के जो वात, जो दोष है, धातु हैं और मल हैं, जिनसे ये जो पूरी बॉडी हमारी बनी हुई है, वो साम्य अवस्था में रहेंगे। उनसे फिर हमको हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, और बॉडी जो इम्यूनिटी हम आयुर्वेद में उसको इन्फेक्शन से, नॉट इवन कोरोना, कोई भी इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। इवन जैसे आजकल अभी हमारे आगे के पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे थे कि इवन डेंगू इज मोर डेंजरस देन कोरोना, उसमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा है, तो उस सब से हम अपने को बचा सकते हैं। हमारा आहार के अलावा हमारा व्यवहार कैसा हो, हमको क्या डूज एंड डोंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद में, कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। आयुर्वेद में दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, ये डिजीज का प्रेवलेंस हमने देखा है कि फरवरी मार्च में ज़्यादा क्यों होता है, कोरोना जैसे आपने देखा है। तो ये हमारी जो ऋतुएं होती हैं, वी आर ब्लेस्ड कि वी हैव 6 सीजन वेरिएशन। और जगह तो बिल्कुल ठंडी ठंडी होती है, विदेश में आपने देखा है 2 सीजन होते हैं, हमारे 6 सीजन होते हैं। आयुर्वेद ने बताया कि 6 ऋतु होती हैं। तो उन ऋतुओं के हर ऋतु के अनुसार, हर ऋतु जैसे 12 महीने होते हैं, तो 2-2 महीने की ऋतुएं होती हैं, और उन सब ऋतुओं का आयुर्वेद में क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसा खाना खाना है, कैसा पानी पीना है, उन सब का ध्यान रखा गया है। तो अब अगर हम उनका पालन करेंगे, उनको हम फॉलो करेंगे, तो हम किसी भी डिजीज को आने से रोक सकते हैं, वो बच्चों में हो, एडल्ट्स में हो या ओल्ड एज में हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो हमारे जो आयुर्वेद लोग कहते हैं कि 5000 साल पढ़ना है, 5000 साल पढ़ने, जब से मैनकाइंड धरती सृष्टि का निर्माण हुआ तब से आयुर्वेद है, हम सब जानते हैं उसके बारे में। और अभी पीछे कोरोना काल में हमने देखा है कि आयुर्वेद इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। मिनिस्ट्री ने तमाम फ्रंट वायरस को डिफरेंट आयुष कार्ड, आयुष 64, ये सब चीज़ें दी, तो उस सब लोगों प्रिवेंशन में अच्छा काम किया। जो फ्रंट लाइन काम करे थे वो इन्फेक्टेड नहीं हुए। वैक्सीन को इम्पोर्टेंट है, वैक्सीन डेवलप को लेना चाहिए, वो डिनाई नहीं है, लेकिन आयुर्वेद का इम्पोर्टेंट रोल है इन्फेक्शन को, किसी भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सब जानते हैं। We now have the second capsule on health resolutions.
वायरल इलनेसेस में हमें सिर्फ एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है पेशेंट्स को। अगर बुखार है तो बुखार की दवाई दे दी, खांसी है तो खांसी की सिरप दे दिया है, वीकनेस वगैरह के लिए हम मल्टीविटामिन देते हैं। पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए बिकॉज पेशेंट्स डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं वायरल इलनेसेस में। और घर का खाना खाएं, बेसिकली रेस्ट करना होता है वायरल इलनेसेस में। और एक ये है कि अगर हम मतलब आजकल जैसे डेंगू चल रहा है, डेंगू इज ऑल्सो अ वायरल इलनेस, मच्छर काटने से होता है और उसका प्रेजेंटेशन भी यही होता है, खांसी, जुकाम, बुखार, बहुत थकान, सिर दर्द। बेसिकली वायरल इलनेसेस कैन बी मतलब मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो सकता है एंड इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सपोर्टिव ऑफ सिम्टोमेटिक होता है। बट ये एक बहुत अहम बात है हमारे उसमें कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मोस्टली जो वायरल इलनेसेस होती हैं उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। हमारा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है बच्चों के लिए वो मोस्टली सारी इलनेसेस को कवर करता है, वायरल इलनेसेस को, चाहे वो मीजल्स हो, टीबी हो, डिप्थीरिया हो, एमएमआर होती है, मीजल, मम्स, रुबेला, चिकन पॉक्स हो, टाइफॉइड की वैक्सीन होती हैं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है। अगर हमारा को हम इम्यूनाइजेशन करें प्रॉपरली, ये गारंटी नहीं है कि उसको इलनेसेस नहीं होंगी, पर ये जरूर गारंटी है कि उसको अगर इलनेस होती है, बीमारी होती है, तो उसकी जो सिवियरिटी होती है, रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है वो कम होता है। आजकल हमारे अभी पिछले हमने अप्रैल और मई में देखा था कोविड इज ऑल्सो वायरल इलनेस एंड हाथ जोड़ के विनती है मेरी सारी दर्शकों से कि प्लीज अगर अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराया है, जो भी सुपरस्टिशन मिथ्स इन्वॉल्व हैं कि वैक्सीन की वजह से ये हानि हो जाती है, ये हमें दिक्कत हो जाएगी, अगर आप लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराया, प्लीज अपने आप को वैक्सीनेट करा दीजिए इफ यू आर एलिजिबल फॉर इट। आई मीन सारे 18 उम्र के 18 इयर्स एंड अबव सारे एवरीवन इज एलिजिबल फॉर द वैक्सीन। तो अगर आप लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराया है, आप अपने आप को जरूर वैक्सीनेट कराएं। Welcome back. We would just like to remind our viewers that we are live on Facebook and YouTube. We now move on to Health Counter, a highly popular health capsule and an initiative of Health4All to connect with India's topmost medical, nutrition, wellness, and public health experts, policymakers, and do a straight talk on the latest topics. Today, we have with us Dr. Amitabh Banerjee, Professor and Head Community Medicine at the D.Y. Patil Medical College, Pune. In his previous role, he served as Medical Officer, Epidemiologist at Indian Armed Forces and Associate Professor, Community Medicine at Armed Forces Medical College, Pune. He will answer important questions on his lifestyle and ignored yet important prevention. This is a recorded version.
Today we have with us Dr. Amitabh Banerjee, who is Professor and Head Community Medicine at Dr. D.Y. Patil Medical College, Pune. In his previous roles, he served as Medical Officer, Epidemiologist at Indian Armed Forces and an Associate Professor, Community Medicine at Armed Forces Medical College, Pune. Speaking to him is Dr. Swadeep Srivastav, one among India's top health communication experts and founder of Heal Foundation and Heal Health, which have been at the forefront of health awareness through healthcare communications. Heal Foundation and Heal Health have been instrumental in creating campaigns and platforms for healthcare improvements in India for the last 2 decades. So I'll start this session with setting the pretext of what Richard Simons said once in an interview with Men's Health magazine, that you can't buy it, you can't rent it, you have to earn it. My formula has been love yourself, move your body, watch your portions. Leading a healthy lifestyle sounds easy enough, right? Could be, but there's a lot of obstacles trying to divert our attention from eating healthy, making healthy choices, and exercising. Fortunately, when you are in the healthcare field, you may see the result of making unhealthy decisions, and it can help you lead a better life that is more fulfilling when you make the right choices. So I think, sir, your talk is also very much aligned with this thought process. And you once also said in one of your headlines, a century ago, the Spanish flu is estimated to have killed between 17 to 50 million people. Since 2020, SARS-CoV-2 is estimated to have taken lives of 5.5 million people, almost all of them either obese, already sick, or above the age of 70. So that is our overall topic of the episode is also, of course, so your focus has always been either sick, means with comorbidities, and your focus has also been emphasizing on a lot of data you have on the obese people, particularly falling prey to COVID and other diseases also. That's also part of comorbidity. So I have been tabulating the data since the onset of the pandemic of different continents and different countries actually. So at the beginning of the pandemic, say sometime in May, June, I tabulated data from 3 continents. And I found that there was a very close association with the obesity levels as measured by the increased BMI, more than 25, and the mortality from COVID. There was almost 10 times difference between the Western countries and the Asian and African countries. I mean, almost 10 times difference between the Western countries and the Asian countries, and almost 15 to 20 times difference with the African countries. So I tabulated the data and compared it with the BMI, that is the measure of obesity, and also the age. Because this was the year, it is a disease of the elderly, comorbid, those who are in nursing homes. So there was a good correlation with age. What was surprising was there was a much more stronger correlation with obesity. Actually, at the population level, this obesity data is available from the WHO site. So obesity data can be compared across countries, and the COVID data can be compared. So this obesity data, what was interesting was that obesity was very strongly associated with and that obesity is a surrogate marker. That obesity per se increases the fatality from all respiratory diseases, not only COVID. If for influenza also, there are papers, and subsequently there are papers that obesity increases the risk of severe disease and mortality from COVID also, because obesity causes the compromised respiratory functions. And also obesity is a surrogate marker of other comorbidities like diabetes, hypertension. So this is that it is you see, we require active involvement of the people to prevent. So actually, people are becoming more passive. You see, to change, it may be just slight changes in lifestyle can cause a great benefit. अभी क्या हो रहा है कि people have become passive. Even पहले क्या टीवी का स्विच के लिए भी अभी बैठे बैठे रिमोट से हो जाता है. Then every program is passive, and they will watch the yoga program and not do it themselves. And they think that medication, that obesity reducing drugs or vaccines or medications, this should be used as a supportive treatment. But because people are going primarily for these passive interventions, like you take a drug for obesity or you take a vaccine for prevention disease, these are passive. So they are ignoring the more important lifestyle changes.
And the lifestyle trend is going with the social changes or working space or home space or diet or recreation. Everything is changing. So I'll just go rapidly. So this is epidemiological approach is like we first do the descriptive, how much, as I said, what is the death per million people in different population. That is the measurement of the COVID impact. Then who are getting affected, the elderly or the obese, where, when and why. And then we make some hypothesis that this may be the reason. Then what can be done? If we find that obesity is related, as one may in the long term, we can say that yes, we should try to go for population weight control and how to prevent in future. And what difficulties are there? Like if we require cycling, we don't have cycle tracks. We don't have even walking tracks nowadays. We are having so much congestion of vehicles. So these are then we want to have good food. We don't have time nowadays. We go for fast food and all that. So these can be the difficulties in lifestyle change. They have no enabling environment. So we can think of, say, in office also, we can have some breaks of some recreation or something like that. Some of the companies are doing. They have yoga in the morning and then they start their work. So half an hour per day is good enough. Half an hour or 40 minutes of brisk physical activity, a brisk walk or some exercises is good enough for a lifestyle change. It is not only the obesity which may or may not reduce, but if you do even 10 minutes exercise daily or 30 minutes exercise, there are many changes, chemical changes, which are very protective for the overall health. And obesity would be a secondary benefit reduction. And this is the take-home messages. Throughout the pandemic, the Western countries are 5 to 10 times higher from COVID. जैसे मैराथन में एक लीड हो जाता है, मैराथन के एंड में भी वही लीड चल रहा है. और इस बीच में इस दौरान कितना कुछ हुआ है. We have had a lockdown. Some countries did not have lockdown. Sweden did not have lockdown. And if you see the data today, Sweden is, though it is in 4 digits because of its overweight and other things, but it is less than the UK and America and other countries which are strict lockdown. Similarly, Japan did not have a lockdown, and Japan rates are something like Asian countries. So all these measures, the more important measures have been the basic health of the people as measured by the surrogate marker of obesity. Age and more importantly obesity. Then Japan, Brazil I have already mentioned. In all this I have just discussed. And all these are related to lifestyle factors like physical activity, diet, tobacco, alcohol, stress, and there have been studies, there have been scientific papers which show that obesity, just control of obesity, excess obesity explains 70 to 60 to 50 to 70% of the deaths could have been prevented. Children are also becoming very obese nowadays. Middle class children and the Western children are already very obese. In Western countries, the childhood obesity is higher than the adult obesity. And if you see in India also, the next generation children are more obese than our generation, because we always pamper our children. उसको chocolate खिलाएंगे, उसको cake खिलाएंगे, उसको ice cream खिलाएंगे, because we love our children. So उससे क्या होता है कि this lifestyle changes are there. What the research shows, as I said, as I go by data, a study, and even our institution has also studied that other problem which is we do not have the lifestyle is not only diet and exercise, lifestyle is also outdoor. Vitamin D is a very important part of immunity. In fact, they have done studies, they have correlated the vitamin deficiency related to COVID impact also. And also vaccine impact. They have done studies that if a person who has got vitamin D deficiency, the vaccine does not work much. Because the vaccine also works by stimulating the ability of the natural infection by stimulate. And if you have got vitamin D deficiency, neither your natural immunity works, neither your vaccine works. So, and we have done, of course, this study, vitamin D study, we have done 5-6 years ago, and we have found the younger generation was 10 times more deficient in vitamin D compared to the older generation. Because the generational wise, the paper we have published, the intergenerational decline in vitamin D, because nowadays everybody, even a this college student has got a car or a scooter, or they don't expose themselves to the sun rays. They just put sunscreen and other things. So there is vitamin D deficiency. And vitamin D, even I though I go outdoor and all that, I also had vitamin D deficiency recently. I am on vitamin D supplementation. So now we are from people who are having a good diet. We think we are having a good diet, but somehow vitamin D is not until unless you spend a lot of time outdoors, which we are not spending nowadays. And then comorbidities like diabetes, we did a survey, we have published these papers.
Another thing is that young diabetics are there in India. Asian countries, all Asian countries have got a susceptibility to diabetes and heart disease a decade or 2 decades earlier than Western because of a genetic central obesity and other things. And most of this young diabetes, 35 to 50 years, 50% of them are unaware of their diabetic status. So you see, most of the time you see कि जिसको कोई कोमोडिटी है कोविड से ही सकम and the young age में आ रहा है. तो most of the time some studies elsewhere they have done, they have found undetected comorbidities which are not there. Similarly, it is for hypertension. Then risk factors, we did a study in even the rural areas, the risk factors of say fast food and sedentary lifestyle is gradually, we have done study, we found the risk factor for this diabetes, risk factor for obesity and hypertension are increasing in the rural areas also. These actually we are adopting the Western culture. In fact, long ago we used to study a lot in your preventive medicine courses about primordial prevention. So we never understood the concept what is primordial. So now we are understanding. Primordial prevention is higher than primary prevention also. That is, those prevent the cultural changes which are harmful to health before they come to a population. That is primordial prevention. So what are the cultural changes? Cultural changes are sedentary lifestyle, automobiles, fast food, and smoking, drinking. And so if a rural population was protected from these cultural changes, it is encroaching on that. So we have been failing in primordial prevention also because of the media, the advertisements and other things. So this cola drinks and this soft drinks which are full of calories. Studies reported with population level vaccination coverage. So this is in this whatever graph I said, and they have done other studies, the 68 countries and 2947 American counties. They compared the vaccination coverage and the trends of COVID trends. So they did not find a big impact at the population level vaccination coverage with the COVID incidence. And now we are seeing Israel also, they are having the 4th dose and still having very high compared to all the previous waves. So until unless your basic lifestyle changes are there, you have got a basic good health, neither your natural immunity works, neither your vaccine works. So this is the healthy meal. This is a Japanese diet. Of course, I don't know what is Japanese diet, but I have taken this from the net. This is Japanese diet because I found they were the healthiest people. So I said, चलो ये क्या खाते हैं देखते हैं कौन सा चक्की का आटा खाते हैं ये लाइक गब्बर सिंह. So अभी क्या है कि खाना देख के तो अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा भी डाइट ऐसे ही मिलता जुलता है. ये देखिए राइस है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है. So we also eat actually basic Asian diets and other things were already very healthy actually. So I don't see much difference when I have a look at this from Indian diets. Whether India has got such good variety of diets, South Indian diets, Marathi diet, Gujarati, all are of natural cereals, all are full of natural vegetables. And these are what we are changing over to the fast food. Burger and so this is the youth is changing over. The next generation already and with that, instead of water, they will take that Coke or Thumbs Up or Fanta. That is full of sugar. That is they say sugar is the new smoking. You see, sugar is the one which causes all the problems. Instead of that high cholesterol and fat, now that hypothesis is also changing. So this is what is happening. And this is over the period of lockdown, they have done studies in USA. People have gained 5 kgs, 10 kgs, 20 kgs weight. So this lockdown and restriction of movement is making you more vulnerable to infections. If you see the plate and the picture of Indian diet, forget about the American burger and all those diet chips and all. But even in Indian diet, sir, don't you think that the portion of rice, roti is much higher than vegetable and dal if you look at the overall plate? Whereas in Japanese or even in foreign countries, whenever we go in Europe or US or we travel and we eat at the restaurants, so we see that there's always a lot of emphasis in terms of the filling the plate with more vegetables and maybe beef or the chickens and everything, and less of bread or everything. Everywhere you start with some salad or some more rich veg. So is there any data available on this that Indian diet Indians eat more carbohydrate compared to other
countries. That's why that can be one of the reasons of imbalance in overall nutrition, sir. You're perfectly right, Dr. Sudeep. Indian diets are high in cereals and it's like rice and wheat, which are almost 60-70% they get the calories from carbohydrate. So there is, of course, these carbohydrates are not very desirable, as you said, if you are having excess of carbohydrates, but they are less harmful than very rapid carbohydrates like sugar, maida. So if you take, multi-grain they take now, we combine it with bajra or wheat. They are also carbohydrates, but they do not have that sudden rise in blood sugar. Glycemic index is less, firstly. Secondly, as you said, the too much of rice, it is a matter of economics also. Poor people cannot afford too much of vegetables. Fruits are getting very costlier. So they cannot afford. So for them, the staple diet will be a bowl of rice or a big thali of rice. I have seen poor people eat it with some salt and water also, nothing else, because that they have to fill their year. But fortunately, what happens, the poor people, they are working more also. They are doing more physical activity. 6-7 घंटे वो काम करता है, तो उसका क्या होता है कि उसका कैलोरी इंटेक मैच हो जाता है. And awareness among the rich people, they can afford to have a variety of diets and cut down on carbohydrates. They can have fruits. They can have actually 5 helpings of fruits are recommended. Minimum 5 helpings, 35 gram in each helping. Almost this 5 helpings of fruits and lot of vegetables. So that gives a diversity. They say as much diversity in the diet and cutting down on the carbohydrate. Firstly, refined carbohydrates, and secondly, as you said, the other too much of rice, which can form the bulk of the year, can be unbalanced a little. But poor people cannot afford it, so we can have some consolation that they work it out. They do the physical activity, so the balance remains, and they can, if they are working in the fields, they may take some gajar or mooli or something. They take vegetables also. They may be munching, but that awareness can be increased. And the poor people can be told to grow their own vegetables, like kitchen garden, other things, so that way. It's maybe a matter of economics. Yeah. Welcome back. We have another set of health resolution videos by our top health experts. Over to health resolutions. कोविड से लोग परेशान तो हैं और डरने की बात भी, क्योंकि जिनके फेफड़े नॉर्मल हैं वही लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, ऑक्सीजन लग जाती है और कईयों की डेथ्स भी हुई हैं। तो जिनका ऑक्सीजन रिजर्व ऑलरेडी कम है, जो हमारे COPD के पेशेंट्स हैं, ILD के पेशेंट्स हैं और जिनको इस प्रकार की सांस की बीमारियां हैं, उनका ऑक्सीजन रिजर्व ऑलरेडी कम है और कोविड जो है लंग को और श्रिंक करके उसको ILD के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अक्यूट ILD जैसा डेवलप होता है, जिससे कि पेशेंट को ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाती है। तो इन पेशेंट में कई बार बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो हमारे जो सांस के मरीज जिनको ILDs थी, जिनको कोविड हुआ, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आई और कईयों की डेथ भी हुई इस बीच में। तो हाँ, इससे डरने की जरूरत है बिल्कुल।
और जो एक सांस का मरीज है उसको रेगुलर वैक्सीनेशन अपने कराने चाहिए। बाकी चीज़ों का अगेन जैसे फ्लू का वैक्सीनेशन हुआ, निमोनिया का वैक्सीनेशन हुआ, कि इन सब चीज़ों से उनको कम इफेक्ट हो बॉडी। घर के अंदर मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जबकि जिस समय आपके बाहर के अगर वर्कर्स आ रहे हों, अब इस समय तो कोविड वेव नहीं चल रही तो आप नहीं पहने, लेकिन जैसे अगर कभी कोविड वेव चल रही हो और घर पे आपके वर्कर्स आप बाहर से बुला रहे हैं, क्योंकि अगर आप खुद बाहर नहीं जा रहे हैं कई बार तो भी लोगों को कोविड हो गया है। कहाँ से आता है? मेड से आता है या फिर जो आपके बाकी हेल्प है घर की, उनसे आता है। तो हाँ, कुछ रूम से मतलब कुछ एरिया कुछ समय के लिए आप मास्क पहन सकते हैं जब बाहर के लोग अंदर हों, और उस समय फुल्ली वेंटिलेटेड रखें घर को, जिससे कि हवा अंदर बाहर हो पाए और हवा स्टैग्नेट नहीं करे उस समय पे घर के अंदर। बहुत ज़्यादा स्टडीज नहीं हो पाई क्योंकि वेव इतनी हैवी रही है, लोगों के ऊपर इतना इफेक्ट रहा है कि उसके ट्रीटमेंट को ज़्यादा स्टडी किया गया है, न कि किन पेशेंट्स में ज़्यादा हो रहा है ये। लेकिन एस्थमेटिक पेशेंट में जरूर दिक्कत आती है, लेकिन मोस्टली दिक्कत इन पेशेंट में होती है जिनमें ऑक्सीजन रिजर्व कम होता है पेशेंट का। एस्थमेटिक पेशेंट हम लोग ये नहीं मानते कि उनका लंग वीक हो गए अगर वो फुल्ली कंट्रोल्ड एस्थमेटिक्स हैं। तो फुल्ली कंट्रोल्ड एस्थमेटिक्स में इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी एक सीओपीडी और एक आईएलडी के पेशेंट में आएगी, क्योंकि इनमें लंग ऑलरेडी अपनी वॉल्यूम कम कर चुका है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है इन बीमारियों में। एस्थमा में इज अ फुल्ली रिवर्सिबल डिजीज कहते हैं इसको, फुल्ली रिवर्सिबल एंड फुल्ली कंट्रोलेबल, इसकी डेफिनेशन में ही आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ठीक से कंट्रोल एस्थमेटिक हैं और आप अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली ले रहे हैं तो आपका लंग रिजर्व कम नहीं हो जाता है। मतलब आपका लंग रिजर्व और एक नॉर्मल आदमी लंग रिजर्व सेम रहता है, बस फर्क ये है कि आप दवाई ले रहे हैं। We now have the second capsule of health resolutions by our experts. The only cancer which has its only cause as a viral background, as in HIV is causing AIDS, HPV is causing cervical cancer. Okay, if there is no HPV in the system, there cannot be a cervical cancer. So it's like 100% positive. But like the cousins in the family, there are many types of HPVs numbered differently. 16 and 18 HPVs are the front runners. They cause most of the cancers. They are the troubleshooters. So initially when the vaccine was bought in, it was against the 16 and 18. Then they recognized that there are a few other cousins in the family who are also responsible. But it's all the HPV family, remember. So then they bought in a vaccine against 5 of these numbers. And at the moment we have a nanovalent vaccine, which means that the 9 main varieties of cousins under the HPV tree, under the HPV family, are directly responsible for the cancer of the cervix. And Ms. Chandra, you'll be surprised, many of the women in the country do not know what a cervix is. Because when I asked the patient, are you aware of cervix? Yes, doctor, I had cervical spondylitis. So the only cervix she knows is her neck. It's a hidden organ. It is the neck of the uterus. Even from there, the awareness has to begin, because whatever happens within the cervix would be not seen or not known to her, but certainly
the adolescent girls, because it is transmitted after sexual activity. So even before embarking into the sexual activity from the age of 9 to 15, that is the key period where you would administer the HPV vaccines. Just like the polio virus was eradicated with the polio vaccines, it's a dream and it's a WHO declaration as well. By 2030, in many countries, they want to wipe off the HPV. That strong and that potent is the relationship between HPV and cervical cancer and the vaccine against it. So the COVID situation has brought to light that we were desperate for a COVID vaccination. And when it came, there were so many questions raised, but with the campaign, it was so easily acceptable. Enough and more noise has not been done regarding the HPV vaccination. Last 1.5 decades, it is available, there is a scientific evidence, it is safe, it is efficacious, but it has not reached the last mile. It has not gone into the girls and women in the country. It's licensed for use between 9 and 45 years. So please, that's why I said it's a key question you raised right at the start, sir. So thank you for that, because everybody in this era where the vaccine acceptance and the vaccine buzz is created, all the girls and women watching this show, I urge you, please ask your doctor more about HPV vaccines, take the required doses and just eliminate HPV from your system, which means you're eliminating the cancer, one of the major killers of women in this great country. Welcome back. I would just like to remind our viewers that we are live on Facebook and YouTube. We now introduce a special capsule called Yoga Mantra, which is on yoga and various ailments. In the first episode, we have yoga that can combat obesity. And demonstrating these asanas is our expert, Dr. Pooja Pandey. Over to Yoga Mantra. Topic for yoga is obesity for yoga. Okay, so very important thing to understand here is when we talk about obesity, we also have to talk about being lean. Okay, so I don't think so. Being lean or obesity is a disease. Not being fit in your body frame is a problem. You agree with me? Because at the end of the day, even if I am thin and I feel fatigue and I feel weak, okay, and I am only surviving on salad and not eating anything to give me energy is also a problem. Why I am telling this, especially in the obesity place, because I make almost 150 to 170 women exercise. Some yogasanas which can definitely help in losing weight are the yogasanas which are basically forward bending, because you are using your abdominal muscles to forward bend. Okay, so it decreases the fat around the abdominal area. So if I do something called Paschimottanasana or if I do Naukasana,
then it is definitely helpful. Now, when I say Naukasana, you need to perform, basically, you need to go down and then come up and hold, toes pointing towards yourself, and hold this pose for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You don't hold your breath in any of the yogasana. Okay, very important is you don't hold your breath. Now, another forward bending pose which we can do is Paschimottanasana, where I go down. You need to go down not from your back, from your hip. So you go down from your hip, try to go down as much as possible and hold this pose. Try to bend your elbow as much as possible. Hold this pose. Okay, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, and relax. So all the forward bending pose will help you lose weight. Okay, so even if I do anything in which I am bending forward, I will, if I go all the way back and I come forward and touch my toe, of course I will start losing weight, because this all works on your abdominal area. The second asana which will help you lose weight is twisting. Okay, so when I twist, for example, this is Gomukhasana, and in Gomukhasana I basically twist. Okay, so then I am working on the side fat. Okay, so all the asanas in which I twist, breathe out, go other way around. So all the asana, even if I do a spinal twist in which I take my leg, cross it over and take it to the other side, this will also help in losing weight, because this is all working on your abdominal area. So you need to understand, one is all the asanas which is basically forward bending will help you lose weight. Second, all the twisting asanas where you are twisting your body will help you lose weight. Third, which is very, very popular among people, are Surya Namaskara. I have demonstrated Surya Namaskara in earlier classes, but I will do. So you can not only do Surya Namaskara, you also have to do, you can also do a lot of variation in Surya Namaskara. But now we need to very much understand that if I am ready to do a Surya Namaskara or not. So whether my blood pressure are all okay or not. Whether you need to understand that one sudden day you are 100 kg and one sudden day you can't decide that I want to do Surya Namaskara. You have to be fit enough to do Surya Namaskara. You can't be having bilateral arthritis and doing a Surya Namaskara. Why I am saying this? Because I am also a physiotherapist. So you need to understand that when you are starting losing Surya Namaskara, you have to also understand whether your body is taking it. Always listen to your body, what signals you are giving. So we'll start with Surya Namaskara. So basically, you come, breathe in. Okay. Breathe out, you go all the way back. Breathe in, breathe out, you go all the way down. Okay. Keep your right leg forward. You can keep your left leg forward or right leg forward. That's all dependent on you. Okay. Now, for example, I am in this pose. I can do warrior pose. So I will come up and I will do a warrior pose. 1, 2, 3, which becomes a variation in Surya Namaskara. Now, Ashtanga Namaskara. So, your chin, your chest, your knee and your ankle, everything is touching the ground. Okay. Breathe in to cobra and breathe out to mountain. Now I am in mountain pose. Your heel is completely down. I keep my one leg up, toes pointing up. Hold it there. Don't hold your breath. 1, 2, 3. This is a variation. You need to understand all these are variation. 10 and relax. You can keep the other leg up. 1,
2, breathe in, breathe out. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And you keep your left leg forward. Okay? Come down. Keep your right leg forward. Look forward. Okay? And go up in chair pose. So you can do a chair pose and hold it here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and relax. Okay? So you need to understand that though there are 12 poses in Surya Namaskara, we do 12 on the right side, then 12 on the left side, making it 24. Okay? But you need to understand that you can do lot of variation in this cycle itself. You can bring 30 more poses. Now, Ashtanga Namaskara. So, your chin, your chest, your knee and your ankle, everything is touching the ground. Okay. Breathe in to Cobra. And breathe out to Mountain. Now I am in mountain pose. Your heel is completely down. I keep my one leg up, toes pointing up. Hold it there. Don't hold your breath. 1, 2, 3. This is a variation. You need to understand all these are variation. 10. And relax. You can keep the other leg up. 1, 2. Breathe in, breathe out. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And you keep your left leg forward. Okay? So one of the very, very good poses of backward bend is Dhanurasana, and it helps in losing weight because it helps in improving your metabolism. So Dhanurasana, how do you do that? You lie down on your tummy and you hold your ankle and you come up. You hold it here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. We will discuss about the importance of heart, factors that's affecting our heart health, and the practical solution how to combat those problems. वृक्षासन भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है. ये आपके बॉडी में एक बैलेंस लाता है. आप जब इस आसन को करेंगे तो बैलेंस लाएगा, माइंड आपका काम होगा, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा रीजन होता है आपके हार्ट इश्यूज के लिए. आपने देखा होगा तनाव, जब भी आपकी तनाव बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती है. तो इस तरह से कामिंग इफेक्ट देता है, आपके चेस्ट को ओपन करता है, हार्ट को ओपनिंग का ये काम करता है. तड़ासना, वृक्षासना के लिए हमें क्या करना है? आपको अपने पैर पे सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करना है, और इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, कुछ दिनों की प्रैक्टिस लगेगी. सबसे पहले आप दाहिने पैर पे, राइट लेग पे खड़े होइए बैलेंस होकर के. लेफ्ट लेग को अपने उठाकर अपने थाइस पर आप बैलेंस कीजिए और अपने हाथों को उठाते हुए जोड़ करके काउंट कीजिए मन में. आप 2, 3, 4, 5. चेहरे पर अपने मुस्कान स्माइल बना के रखिए. फिर आप अपने पैर को नीचे कीजिए. फिर इसी तरह आप राइट लेग को उठाकर अपने लेफ्ट लेग के थाई पर रखिए और गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए. अपने आप को बैलेंस कीजिए. फिर आप अपने आप को नीचे कीजिए. आप इस काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं. अपने आप की जितनी जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आप इसे ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं. अगर आपका पेट खराब हो तो आप भी इमोशनली थोड़ा सा ना मूड खराब ही होता है, राइट? सो your digestive system to be clear, to be happy is extremely important for your day.
Today we're going to go through a couple of asanas. Okay. It is very important that first, if you've had an accident, if you are not well, or if you're pregnant, you should get asanas consulted by a yoga therapist or a physiotherapist. Let's first start with asanas that you're doing when you're standing. Okay, standing asanas. बहुत ही सिंपल आसनास है. Okay, जो कोई भी एज का कोई भी कर सकते हैं. We'll start with those first. Okay. When you're doing for your gut health, there are two things you have to keep in mind. One, you're looking at your digestive system. जैसे अगर आप सोच रहे कि आपको shoulder के लिए exercise करना, what will you do? You'll move your shoulder. You'll take weights to strengthen your shoulder. In the same way, if you're thinking about your gut, you have to move your gut. Everything is about your gut. And secondly, what is important are your hips. If your hips are not loose enough, if they're not comfortable in movement, then you will have some sort of a gut problem. Hip distance between your legs and just move. Okay, rotation. Second one that you can do. Okay, hip distance. Lift one hand up. Bend to one side. Lift the other hand up. Bend to the other side. Third one that you can do. Back straight, spine straight, fold your waist, bend down. Okay. What a lot of people do is they do this. They slouch and they try to reach. Now that is not good. Okay. Your spine needs to be straight. Fold your back, fold your waist, and bend down. 45 degrees or a little more. How much have you get? जितना हो सकता है उतना करें. Okay. What you're doing here is you are pressing your stomach. Okay, यहाँ पे. So then you can come up. Support your back. Bend back. Come back straight. Very simple exercises. From here you can move to twisting. Twist your back. Okay, these can be done by absolutely anybody of any age. These are very simple. Enough distance between your legs. Now, move, turn your one foot. You can, let's say, start with left leg. Turn your left leg. 45 degrees. The right leg looking straight. Bend down. In any case, your knees should be at 90 degrees. हमेशा 90 degrees होना चाहिए. अगर आप ये कर रहे हैं, तो there are more chances of injury. Okay, तो safe side के लिए हमेशा आपकी नी फुट की जो लाइन है उसके पीछे ही होनी चाहिए. So you stay at 90 degrees. Take the support of your hand, keep it on your knee, and then lift your hand up. Okay, your leg, body, and hand. Everything is in one straight line. Same thing you will do on the other side also. 90 degrees, take support of your hand, lift your hand up in one straight line. Okay? इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप आगे मुड़ो. That is wrong. You have to be in the same plane as your legs and then look straight. आज की डेट में अगर आप योगा for mental health देखेंगे तो there are people running. They will not do many of the asanas. They will only concentrate on your mental well-being. So they will just do few stretches and the whole half an hour or 1 hour we will be doing pranayama and meditation, which is a big advancement in yoga. From I'm talking about 80s, 70s, 90s के बाद आज की डेट में योगा को mental health के लिए बहुत beneficial माना जाता है. Thing called yoga capsule. अच्छा, योगा कैप्सूल क्या है कि आप बैठे बैठे, जैसे कि ये जनरली योगा कैप्सूल कॉर्पोरेट्स में और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, स्कूल के बच्चों में ये बहुत बेनिफिशियल आजकल हो रहा है. तो क्या करते हैं कि एक योगा टीचर को लाते हैं और 5 मिनट से लेकर 15 मिनट की क्लासेस रखते हैं, जिसमें बेसिकली चेयर योगा करते हैं, चेयर स्ट्रेचेस करते हैं, या फिर सडन मतलब रिफ्रेश कर देते हैं. From basically sitting for so long time, what can you do that
15 मिनट में आप रिफ्रेश हो जाइए। कौन से ऐसे स्ट्रेचेस हैं जिसको 15, तो ये जनरली हम सेडेंटरी वर्कर्स के लिए करते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के लिए करते हैं। और आजकल क्योंकि बच्चे भी कंप्यूटर के सामने हमेशा बैठे रहते हैं, तो बच्चों के लिए भी होता है। इसको बोलते हैं योगा कैप्सूल। ऑल्सो योगा कैप्सूल में आप जैसे 10 मिनट आपके पास है और आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, तो आप जस्ट आंख बंद करके मेडिटेट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप 10 मिनट 15 मिनट योगा कर रहे हैं तो उसको योगा कैप्सूल आजकल बोला जाता है। एक डेली रूटीन में हमारे यहाँ चाय का क्वेश्चन हो गया है। डेली रूटीन में हम चाय पीते हैं। किसी को चाय पीने के लिए मना कर दें तो आज के डेट में ये बहुत बड़ी परहेज हो जाती है। तो हम चाय मना नहीं कर रहे हैं, चाय में ही कुछ चीजें आप मिक्स कर दें तो आपको वायरल इन्फेक्शन से, मौसम के चेंज होने से जो प्रॉब्लम होता है, सर्दी जुकाम बुखार सिर दर्द, ये सारे चीजें से आप उसको होगा। तो सबसे पहले बेसिकली हम एक बताते हैं जो आजकल पूरी दुनिया में वो चली गई है। हमारी बॉडी पंच तत्व से बना हुआ है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। तो तुलसीदास जी ने भी लिखा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इसका मतलब है जो पांच तत्वों से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और इसी पांच तत्व के कम और ज्यादा होने से हम बीमार होते हैं। अब हम आपको बताते हैं, एक चाय पीने की रेमेडी बताते हैं। अगर मेरे अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग में आता है और बाकी कई लोगों पे हमने इसका प्रयोग किया है। वह वायरस इन्फेक्शन, उसके बाद सर्दी जुकाम, ठंड से होने वाले परेशानी, सीजन से चेंज होने वाले परेशानी, माइग्रेन का केस हो, साइनोसाइटिस का केस हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, लंग्स की प्रॉब्लम, सभी में ये अगर एक कप आप सुबह की चाय पी लें तो आपको। तो हम कुछ चाय की हर्ब्स बताने जा रहे हैं जो हमारे किचन में उपलब्ध हैं। सौंफ है, मेथी है, बड़ी इलायची, अदरक, दालचीनी और अर्जुन का छाल। अब हम एक एक करके बताते हैं। अर्जुन का छाल आप सुने होंगे, आयुर्वेद में इसकी मेडिसिन बनती है, अर्जुनारिष्ट। और अर्जुन के छाल जो है हार्ट और लंग्स को बहुत ही मजबूत करता है। कोरोना काल में कई लोग हार्ट अटैक से चले गए, नहीं रहे। तो अगर आप अर्जुन की छाल चाय में प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे हार्ट से जुड़ा हुआ कोई भी परेशानी है वो ठीक करता है। अच्छा, अर्जुन की छाल में जो बेनिफिट है वो ये है जो बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को भी कंट्रोल करता है। तो आप क्या करें, जो आप लेते हैं एक चम्मच, छोटी चम्मच से जब चाय बनाते हैं, एक आदमी के लिए, दो आदमी के लिए एक छोटी चम्मच से 1 चम्मच सौंफ लें, एक छोटी चम्मच से मेथी लें, बड़ी इलायची लें, अदरक लें और अगर अर्जुन का छाल है या अर्जुन का पाउडर तो 1 चम्मच वो डालें और उसको बिल्कुल धीरे से उसको उबालें। Welcome back. We now move on to session 2 on sexual and reproductive health, current status, challenges, and the way forward. Let's have the session intro. In today's session, we have with us Dr. Ajay Khera, currently serving as country representative in gender health. He's a recognized consensus builder of various stakeholders in advancing issues concerning reproductive health, maternal health, newborn and child health, including immunization, family planning, and nutrition agenda in India. He holds expertise in program management of various national public health programs at national level, namely Integrated Disease Surveillance Program, National Leprosy Eradication Program, National Soil Transmitted Helminth Control Program, National AIDS Control Program, National Polio Eradication Program, Reproductive and Child Health Program, Universal Immunization Program, Non-Communicable Diseases Program. Dr. Ajay is also a specialist in epidemiological surveillance and outbreak
outbreak investigation of communicable diseases, including vaccine preventable diseases. Welcome, Dr. Khera. The next speaker is Dr. Rajesh Fanindra Katre. He's an experienced public health consultant, maternal and child, with demonstrated history of working in the medical practice industry, skilled in epidemiology, health promotion, medical nutrition therapy, healthcare management, clinical research, protocol writing, biostatics, and healthcare. He has a strong healthcare services professional with an MD focused in postgraduate resident in community medicine, public health from St. GS Medical and KEM Hospital, Mumbai. We have also with us Dr. Anisha Agarwal, who is currently serving as a Senior Director of Strategy and Development at IPAS Development Foundation, an NGO, Indian NGO that is dedicated to preventing and managing pregnancies. Her focus areas also include documentation of programs and results and support to policy initiatives. She is keenly interested in improving healthcare for young people, integrating reproductive rights with human rights, and analyzing impact of projects on improved planning and leveraging. She holds a postgraduate diploma in human rights law from the National Law School, Bengaluru, and a master's degree in linguistics from the Jawaharlal Nehru University. Welcome, Ms. Anisha. Next, we have Ms. Shuma Banik, who heads the Happy Periods organization and has worked extensively on menstrual health, nutrition, and adolescent health. She has worked in different capacities like partnership, capacity building, strategy, and outreach to ensure health and well-being of adolescents in remote pockets of India. Her passion lies in creating period-ready spaces, and this led to an initiation of a project, Happy Periods, in Gujarat, rural Gujarat, when she reached 30,000 girls, 200 plus health workers across 900 villages. Kuki Seth works as a gender specialist at the International Center on Women, and her work primarily is in public health domain around sexual and reproductive health and family planning. Prior to ICRW, she worked at Sambodhi Research and Communications, the Population Council, and the Times of India. Kuki has masters in Women's Studies from the Tata Institute of Social Sciences and Mumbai, and holds a diploma in journalism from the Asian College of Journalism, Chennai. Over to you, Kishore, for your first round of questions. Thank you, Mr. Shankar. मेरा पहला सवाल डॉक्टर अजय खेरा से है. डॉक्टर अजय, भारत में एनीमिया डिटेक्टिंग एक बड़ी चुनौती है. ऐसा क्यों, खासकर रूरल इंडिया में? अनीमिया की जो प्रॉब्लम है, जैसे आपको मालूम है कि every alternate woman in the country is found to be suffering from anemia, and which is a huge number, roughly 50%. Now the major reasons for high level of anemia in India is that people are consuming food which does not contain enough iron and minerals. That's why under the program, one of the important strategy for preventing and controlling anemia is giving supplementation iron across the board. Every woman is asked to take something called as the iron folic acid supplementation. And particularly during pregnancy and lactation time, when the requirement of iron is very high, and you must have seen all the national programs, they recommend IFA supplementation. There is a special program by Government of India which is called as the weekly iron folic acid supplementation. Again, the hypothesis is that we are consuming less iron. Our food contains less iron. In order to address that, the less consumption of the iron folic acid, supplementation is required. Keeping in this point in mind, even the Government of India has also came up with a big program of food fortification. Like wheat is being fortified with iron, rice is being fortified with iron, even the salt which we are consuming every day
Even that is being talked about in terms of fortification, double fortified salt, which contains iron and salt. So the point, what I'm trying to say is that we as Indians, consuming less of iron than what is required by the body. That's all from my side, I think, in terms of why so much of anemia. डॉक्टर साहब, ये कोविड महामारी के दौरान जो पेंडेमिक फैला हमारे देश में, उसमें बाकी बीमारियों के लिए तो खैर ये घातक रहा ही, एनीमिया के पेशेंट को किस तरह से और कितना भयानक तरीके से इसको प्रभावित किया? देखिए, अनीमिया जो एक प्रॉब्लम है ना, बहुत ही साइलेंट किलर होता है ये। अनीमिया से मतलब एकदम लोग नहीं मरते हैं। अनीमिया से आपका बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, आपकी बॉडी की एफिशिएंसी कम हो जाती है। जैसे खासतौर पर लड़कियों में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, तो वो अपने आप को जल्दी से टायर्ड महसूस करती हैं, अपने आप को थोड़ा सा काम करने के बाद एग्जॉस्टेड फील करती हैं। दे आर नॉट रियली सिक, बट देयर एफिशिएंसी रिड्यूसेस। इवन लोग बोलते हैं कि यदि जैसे बच्चों में अनीमिया रहने से बच्चों के दिमाग में जो ग्रोथ होती है ना, मेंटल ग्रोथ होती है, उससे जिसको हम बोलते हैं कॉग्निशन, बच्चों को यदि, क्योंकि ये प्रॉब्लम बच्चों में भी बहुत ज्यादा है इंडिया में, यदि माँ को अनीमिया है तो बच्चों को भी अनीमिया है, तो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निशन डेवलपमेंट, उनकी शार्पनेस, इंटेलिजेंस ऑफ द ब्रेन ऑल्सो रिड्यूसेस। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है, जो आपकी बॉडी की एफिशिएंसी, बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ कम कर देती है, और यदि उसके ऊपर आपको कोविड होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम बढ़ी जाएगी आपको। तो आई थिंक इट इज काइंड ऑफ ए रेसिपी फॉर एनी डिजीज, it will kind of exaggerate that particular disease. डॉक्टर खेड़ा, आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर राजेश कात्रे, रूरल इंडिया में महिलाओं के सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या स्थिति है इस समय, और क्या ये संतोषजनक है स्थिति? जैसे कि आप कोविड महामारी के बाद पूछना चाहते कि अभी करंट स्टेटस पूछना चाहते हैं, जैसे करंट स्टेटस ओवरऑल जो अभी, जैसे कि अभी जो कोविड महामारी के पश्चात जो हमें पता चला कि जैसे कि जो बहुत सारी सर्विसेज हैम्पर हुई थी, जिसमें और हमने देखा कि उसमें जो एएनसी कवरेज हो या फिर जैसे जो फर्स्ट टाइमर से एएनसी रजिस्ट्रेशन, वो कुछ चीजें जैसे ड्रॉप आउट हो गई थी, क्योंकि जब फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान जो है कि जो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार नहीं थे, वो एक चीज हुई थी। और उस समय जो डिलीवरीज जो है अभी, जो फिलहाल जो डिलीवरीज जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जो डिलीवरीज हो गई थी, वो उस समय कम हो गई थी। ठीक है, होम डिलीवरीज का प्रमाण कुछ स्टेट्स में बढ़ गया था, और जो अपनी जो हेल्थ जो फैसिलिटी है, जो सर्विस दे रही थी, वो फैसिलिटी डिवाइड हो गई थी। और उसके बाद में जैसे कोविड वैक्सीनेशन चालू हुआ तो उसमें भी फैसिलिटी थोड़ा डिवाइड हो गई, तो उसके अंदर थोड़ा सर्विसेज जैसे इफेक्ट हुई थी। बट ये ओवरऑल जो काफी स्टेट्स में जैसे उन्होंने अच्छा कुछ काम किया है। डॉक्टर कात्रे, यस, मैटरनल मोर्टेलिटी जो है हमारे देश में एक बड़ी और चिंताजनक समस्या है। यस, एक तो इसके पीछे क्या बड़ा कारण है, और इसमें क्या हमारी पॉलिसी में कोई कमी है? ओके, सो मैटरनल जैसे कि अपना एज पर जो एसआरएस डेटा जो है, उसके हिसाब से जो अपना मैटरनल मोर्टेलिटी इंडिया का अभी जो 2016 में डेटा रिलीज हुआ था, उसके हिसाब से मैटरनल मोर्टेलिटी अभी अपना 113 है। और उसमें जैसे कि आप पिछले 10 या 12 सालों 2003 से देखें तो अपना मैटरनल मोर्टेलिटी में जो रेशियो बहुत उसमें कम हुआ है। सो basically there are 4 phases in maternal mortality, like obstetric transition phases. So some states of India are in the phase 3 and some states are in phase 4, like Maharashtra and Kerala are now in the phase 4, where the maternal mortality ratio is less than 50, while the other states like this Assam and UP and other those are in the obstetric transition phase 3. So there are like we have to do like in phase 4, the direct obstetric causes, the maternal mortality due to direct obstetric causes are decreases, while in phase 3 the direct obstetric causes like or antepartum hemorrhage is there, postpartum hemorrhage is there, sepsis is there,
then obstetric labor is there. So these are all the preventable causes, and these causes are more in this obstetric transition phase 3, where the maternal mortality is between the maternal mortality ratio is between the 50 to 299. So we have to separate, like if particular state is there, we have to plan for district wise, where district wise planning is more important. Like the guidelines are also there, but there is a handholding of the staff is more important. Like the maternal mortality due to the hypertensive disorder, hypertensive disorder in pregnancy is more. So capacity building of staff is more important. Like BP measurement. If we are seeing that when we analyze the any maternal death, we see that when the on MCP card the BP is like 100 by 70, 100 by 70, 100 by 70, and when this patient is referred to the FRUs or district hospital, on that time we see that the BP is 140 by 90. So the capacity building of the front care healthcare workers is more important, like in BP measurement or urine albumin checking. So these are more important. One more important, like when we see that like there are the 3 types of delay in maternal mortality, like in delay in decision, then delay in decision to seek care, then delay in the referral, and third is the delay in treatment at the facility. So we have to, for these delays, we have to like delay in decision to seek care. We can address to the emphasis on the focus on the IC of various maternal health services like JSY, JSSK, 102 ambulance, PMY, and we have to sensitize these health workers and community regarding the pregnancy-related risk factors and complication among the communities. While the delay in the referral, we can be addressed by strengthening the referral linkage by mapping the nearby equipped health facility and preparedness of the health facility to attend the emergency cases. Like FRU are also functional there. One more important thing is we can do the training activities or all MOs in like BMOC and nursing staffing staff SAP at the all delivery points. And high risk pregnancy detection is more important things. Like as per the Government of India guidelines, the 4 ANC checkup are important, but as per the WHO guidelines, which was released in 2016, so 8 ANC checkup is required. So we can give this high risk detection is more important, and we can give this 8 ANC checkup to this high risk pregnant woman. So screening is more important, and high risk pregnancy detection is more important. So we can manage this high risk pregnant woman, and we can as per our delivery points, we can map them. And this one more thing more important is like we know that the maternal death are more during the labor and while delivering the baby and postpartum, like within this 24 hours. So we have to focus on this 24-hour by giving the quality service. Like Lakshya program is already there. Now the Suman program is launched by Government of India. So in that period, we can give the quality care services to all our pregnant women. And we can also add the special drive for the high-risk pregnancy detection, anemia detection. And we have to, IC is required in local language for prevention of the maternal deaths. डॉक्टर कात्रे, हम फिर लौटेंगे आपके पास. अब वक्त है मिस अनीशा अग्रवाल के पास चलने का, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये शो YouTube और Facebook पर दुनिया भर में लाइव देखा जा रहा है और काफ़ी लोगों के रिस्पांस भी आ रहे हैं, सवाल भी आ रहे हैं. हम कोशिश करेंगे कि उनमें से कुछ सवाल आप तक लाएं और आपसे जवाब लें. अनीशा जी, एक स्टडी के अनुसार प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान मेजर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस झेलने वाली कम उम्र की महिलाओं में 48% ऐसी 48% ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता है. आपकी क्या राय है? तो प्रॉपर ट्रीटमेंट, और आई थिंक ये डॉक्टर राजेश ने भी यही पॉइंट अभी कहा. हम यही देखते हैं कि महिलाओं के लिए जो केयर सीकिंग है
उनको हॉस्पिटल ले जाने का जो समय है, चाहे वो किसी भी तकलीफ के लिए हो, और खासकर सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो वजह है उनके लिए देखा जाता है कि उसमें बहुत डिले होता है। ना तो महिलाएं खुद ही अपने आप की प्रॉब्लम्स को समझ पाती हैं, और ना ही उनको अक्सर ये सपोर्ट मिल पाता है कि वो ठीक तरीके से हॉस्पिटल पहुंचाई जा सके। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाना, चाहे वो डिलीवरी के टाइम पे भी क्यों ना हो। अक्सर ये माना जाता है कि डिलीवरी के लिए तो उनको हॉस्पिटल ले ही जाया जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिटी में, परिवारों में, खासकर आदमियों में, जो महिलाओं के पार्टनर्स हैं, उनमें हम ये अवेयरनेस फैलाएं कि कितना ज़रूरी है महिला की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को समझना, उसको आइडेंटिफाई करना, और ये आइडेंटिफाई करना कि कब उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की या मेडिकल सहायता की ज़रूरत है। तो मेरी राय तो यही है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा हमको कम्युनिटी में, महिलाओं में अपने आप में ये जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि उनकी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है और उनको कब मेडिकल केयर की ज़रूरत है। अनीशा जी, लोगों में इमरजेंसी कंट्रासेप्शन और मेडिकल एबॉर्शन को लेकर काफी गलतफहमियां हैं। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? जी, तो दोनों के नाम से ही हमें अंतर समझ आ जाता है। अगर हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन समझें तो उसमें कॉन्ट्रासेप्शन है, और मेडिकल अबॉर्शन समझें तो वो अबॉर्शन है। जिसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि इट विल प्रिवेंट अ प्रेगनेंसी। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मेरी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है इफ आई हैव हैड एन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट। वेयर एज मेडिकल अबॉर्शन, अबॉर्शन का मतलब ही है कि अगर मुझे एक अनचाहा गर्भ मैंने धारण कर लिया है, तो मैं उसका अबॉर्शन कैसे कर सकती हूँ। अगर एक बार अगर एक बार प्रेगनेंसी हो गई है, कंसीव कर लिया है, तो उसमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का कोई रोल नहीं है। कॉन्ट्रासेप्शन का रोल प्रेगनेंसी होने से पहले है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। और मेडिकल अबॉर्शन का रोल तब है जब मेरे पास एक अनवांटेड प्रेगनेंसी है और मैं उसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ। एक सवाल एमटीपी एक्ट पर है, आपकी क्या राय है? क्या इसमें कमियां हैं? नए कानून की जरूरत है भारत के संदर्भ में? मुझे लगता है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि एमटीपी एक्ट हमारे देश का अभी-अभी अमेंड हुआ है। हमारा जो एमटीपी एक्ट 1971 से चला आ रहा था, ऑफ कोर्स 2004 में, 2003 में भी एक बार अमेंड हुआ था, पर अभी जो पिछले साल अमेंडमेंट्स हुई हैं, उनके तहत हमारी अमेंडमेंट्स में काफ़ी बदलाव आए हैं, और मुझे लगता है कि हमें उसमें कमियाँ ज़रूर हैं। ये कहना ठीक नहीं होगा कि हमारा एमटीपी एक्ट बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, पर फिर भी हमें ये देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या अच्छे बदलाव आए हैं। और उनमें से जो 2-3 बदलाव मैं हाइलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि अब सबसे बड़ा हमारा ये बदलाव है कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, जो एक रीज़न माना जाता है हमारे देश में लीगल अबॉर्शन के लिए, लीगल एमटीपी के लिए, उसमें अब हमने अनमैरिड महिलाओं को भी शामिल कर दिया है। जो पहले कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर केवल मैरिड महिलाओं के लिए था, वो अब अनमैरिड के लिए भी लागू है। हम अब एमटीपी एक्ट में जो पहले 20 हफ्ते तक की जेस्टेशन पीरियड थी, अब वो 24 हफ्तों तक बढ़ा दी गई है, कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ वुमेन के लिए, जिनमें माइनर्स, सर्वाइवर्स ऑफ रेप, डिसेबल्ड वुमेन, वुमेन इन ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स, और कुछ ऐसी महिलाएं हैं। तो इनका फायदा होगा, इससे फायदा होगा उन महिलाओं को जो बार-बार कोर्ट जा रही थी अबॉर्शन की परमिशन लेने के लिए। और दूसरा और तीसरा ये हाइलाइट मैं करना चाहूँगी कि इन केसेस ऑफ फीटल अबनॉर्मैलिटी, सीवियर फीटल अबनॉर्मैलिटी, अब हमारे देश में कोई भी जेस्टेशन लिमिट को हटा दिया गया है। तो अगेन जो हम देख रहे थे कि कोर्ट्स में इतनी भीड़ है बिकॉज़ ऑफ फीटल अबनॉर्मैलिटी, जो महिलाएं जा रही थी कोर्ट में परमिशन लेने के लिए, अब उनको एक मेडिकल बोर्ड के तहत ही अबॉर्शन मिल सकता है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एमटीपी एक्ट में कमियां हैं, उसमें सुधार लाए जा सकते हैं। जैसे अभी भी सबसे बड़ा जो सुधार लाने की शायद ज़रूरत है वो ये है कि अभी भी एमटीपी एक्ट के अनुसार भी अबॉर्शन एक महिला का हक नहीं है, उसका अधिकार नहीं है। उसको एक डॉक्टर के ऊपर रिलाय करना पड़ता है ये प्रूव करने के लिए कि वो एमटीपी के लिए एलिजिबल है। तो कमियां ज़रूर हैं, लेकिन अभी जो रीसेंट अमेंडमेंट हुए हैं उनके तहत बहुत आगे भी हम बढ़े हैं, पर ज़रूरत अब ये है कि हम इनको लागू करें, इस एक्ट को लागू करें। थैंक यू अनीशा जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास। मिस कुहिका सेठ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 के अनुसार
सिर्फ 10% पुरुष ही कॉन्डोम यूज करते हैं और 40% महिलाएं प्रेगनेंसी रोकने के लिए स्टेरिलाइजेशन कराती हैं। क्या फैमिली प्लानिंग केवल महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और ये सिर्फ रूरल नहीं, अर्बन एरिया में भी हो रहे हैं। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? शुक्रिया इस सवाल के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो नया एनएफएचएस डेटा आया है इसके तहत, और पुराने एनएफएचएस सर्वे भी अगर हम उठा के देखें तो यही इसी तरह का गैप नजर आता है। जो बहुत सारी बात अजय जी, डॉक्टर राजेश, अनीशा जी ने भी कही, a lot of this is associated with gender and social norms। किस तरह के पुरुष और महिला के बीच में पावर इम्बैलेंस रहता है, किस तरह पुरुष किस चीज का कंट्रोल रहता है एक हाउस होल्ड में, इंडिविजुअल लेवल में, कपल लेवल में, स्ट्रक्चरल लेवल पे, जिसका हेल्थ सिस्टम्स एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जिस तरह की बातें डॉक्टर राजेश और अनीशा जी ने भी कही कि क्वालिटी ऑफ केयर, उसका भी एक स्ट्रक्चरल दायरा है कि जो हेल्थ सिस्टम्स के खुद ही लोग हैं वो किस तरह से एक औरत को देखते हैं, एक अनमैरिड वुमन जिसकी प्रेगनेंसी हो गई हो उसको कैसे देखते हैं। और अगर हम फैमिली प्लानिंग के अंदर जो आपने सवाल पूछा है, औरत और महिला के बीच में कौन कॉन्डम इस्तेमाल अभी भी कम क्यों किया जा रहा है, इसके बहुत सारे सप्लाई साइड इश्यूज भी हैं, जो कि कॉन्डम की अवेलेबिलिटी, डिस्पोजल का मसला, क्योंकि रूरल एरियाज में अभी भी बहुत स्टिग्मेटाइज्ड हैं ये सारी चीजें। बट ये एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड बात है कि औरत ही कराएगी, स्टरलाइजेशन कराएगी, नहीं तो गोली लेगी, नहीं तो कुछ और, मतलब, या अबॉर्शन भी, मतलब वुमेन्स बॉडी का जो मेंटल एंड फिजिकल डिटीरियोरेशन है या एक्सप्लॉइटेशन है, वो एक एकदम नॉर्मलाइज सी बात है। तो ऑल्सो फैमिली प्लानिंग हमेशा से ही एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच से चलता है, पॉपुलेशन कंट्रोल टूल के हिसाब से, ना कि एक राइट्स बेस्ड अप्रोच। जैसे अबॉर्शन भी जैसे एक राइट होना चाहिए, उसी तरह फैमिली प्लानिंग भी एक राइट होना चाहिए। बट जब आप महिला का निर्णय करने का जायजा एक घर में, खाने से लेकर पैसा खर्चने से लेकर कहाँ क्या करना है, सब से लेकर, अगर आप वो ही नहीं बदल पा रहे हैं तो फैमिली प्लानिंग के डोमेन में आते आते कॉन्ट्रासेप्शन कब कैसे यूज करना है, इनफैक्ट सेक्स का टाइमिंग, मेरा मन नहीं है, औरत का यही बोलना इतनी बड़ी बात हो जाती है कि अब्यूज, फोर्स सेक्स, ये सारी चीजें हम सब जानकार हैं इस बारे में। तो इसीलिए मतलब बहुत सारे सोशल और जेंडर नॉर्म्स के चलते, नॉर्मेटिव बिहेवियर्स के चलते, there are reasons because of which women are not able to control their bodies, their lives and their reproductive decisions, to be in specific। तो इसका मतलब जो मैं समझ रहा हूँ कि फैमिली प्लानिंग जो आज किताबी बातें रह गई हैं, उसको जीवन में उतारने के लिए पुरुषों को जागरूक करना ज्यादा जरूरी है। तो उसको कैसे, यूं कहें कि हम कैसे एंगेज करें उनको? जिस तरह से आपने शायद पढ़ा भी होगा, बट जैसे ICRW का एक प्रोजेक्ट था अभी पुराना, कपल एंगेज, जो कि यूपी बिहार में करा गया था, एंड उसमें महिलाओं से और पुरुषों से दोनों से बातचीत करी गई थी समझने के लिए कि वो क्या महिलाएं क्या सोचती हैं और पुरुष क्या सोचते हैं। तो पुरुषों का एक प्रोटेक्टर, जैसे हम कहते हैं ना, वो पुराना प्रोटेक्टर की मैं घर की महिला का ध्यान रखूंगा, प्रोवाइडर की मैं खाना दूंगा, प्रोक्रिएटर की मैं बच्चा करूंगा, तो उस तरह का एक रोल उन्होंने समझने शुरू कर दिए हैं, या वो चलते आ रहे हैं पिछले जमाने से। मेल एंगेजमेंट का जो एक काम है, वो काफी समय से इस पे काफी काम हो भी रहा है, काफी लोग इंटरेस्टेड भी हैं, बट वो ग्रास रूट लेवल पे, रूरल लेवल पे, इवन अर्बन लेवल पे, हम भी, आप भी, वो सोच बदलनी, आप जितने मर्जी प्रोग्राम चला लीजिए, इंटरवेंशन चला लीजिए, काफी कुछ कर लीजिए, बट जो माइंडसेट चेंज है या जो पर्सपेक्टिव चेंज है, वो लाना सालों साल का काम है, और वो धीरे धीरे ही होता है। और पुरुषों का इस चीज को महत्वपूर्ण समझना कि बच्चा संभालना महिला का काम और कमा के लाना मेरा काम, ये जेंडर रोल्स, इनको ब्रेक करना, हर छोटे मुद्दे पे इस चीज की खुल के चर्चा होना, पावर इम्बैलेंस, जो हम जेंडर इक्वालिटी की सब बात करते हैं, बट अपने ही घरों में हम जब पहुंचते हैं तो खाना कौन पका रहा है, ये छोटी छोटी चीजें, मतलब उनसे भी हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन की बात है, ये सब चीजें में बदलाव आने के लिए मैं वही समझती हूँ कि जितना ज्यादा काम आप लोगों के माइंडसेट एंगेजमेंट के साथ कर पाए, और कोई जल्दी इसके शॉर्टकट मेथड है ही नहीं कोई,
अब जो इतने सदियों से चल रही है बात, वो आप 2 साल के प्रोग्राम, 3 साल के प्रोग्राम में बहुत कम ही अचीव कर पाएंगे। तो एक स्टैगर्ड वे में, एक कंसिस्टेंट सस्टेनेबल वे में अगर इसके बारे में बातचीत करी जाए और एक्चुअल में उसका मतलब वो जो एक नॉलेज गैप भी हम कहते हैं कि समझ है हमें बट हम कर नहीं पा रहे हैं, वो चुनौती को पूरा एड्रेस करना एक सस्टेन्ड वे में बहुत जरूरी है। थैंक यू कोहिका जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर लौटेंगे आपके पास। मिस शुमा बनिक, आपसे मेरा सवाल ये है कि मेंस्ट्रुएशन तो नेचुरल चीज है, लेकिन इसके साथ स्टिग्मा क्यों जुड़ा है, कैसे दूर करें? तो कोई भी चीज जो भी which is around sexual and reproductive health, that is always a hush-hush topic, right? Like we don't talk about it. And especially when it comes to women or people who identify themselves as women or from the trans community, especially the menstruators. So they go through, they are always stigmatized क्योंकि वो already एक marginalized community से belong करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा significant factor which contributes to this hushiousness of period being not spoken about or and even families maybe. So I feel that patriarchy has a significant role to play, and the one way to do away with this is to fight patriarchy in our own capacities and capabilities, and everyone has their own way of doing it. I believe there are communities, the community I worked with in rural Gujarat, that very different cultural norms. And I come from Assam where I had very different cultural norms, right? So our ways of fighting will also have to be very different. And also at the same time, we cannot design one solution for all the communities, especially when we're working with communities, when we're working with women across the country. So everything has to be very contextualized. I think, that's one way, like challenging the norms is what we can do to. शुमा जी, हमारे पास एक सवाल आसनसोल वेस्ट बंगाल से आए हैं। कोई लड़की है लेकिन वो नाम नहीं लिखना चाहती हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ सैनिटरी पैड्स इतने महंगे हैं कि हम खरीद नहीं सकते हैं। क्या सरकार या किसी एनजीओ के द्वारा कोई अभियान चलाया जा रहा है कि घर घर ये मुफ्त में पहुंच सके या कम कीमत पर पहुंच सके? एक दो चीजें हैं इसमें, बहुत सारे अभियान चल रहे हैं जिसमें और बहुत सारे CSOs भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं, CSOs काम कर रहे हैं ताकि घर घर सैनिटरी नैपकिन्स पहुंचे। बट इसके अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? हम लोग हमेशा क्लॉथ पैड यूज कर सकते हैं, बट उसको यूज करने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे क्लॉथ पैड यूज करें। वो ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बट हम पुश नहीं कर सकते कि हाँ ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है तो आप यही यूज करिए। बट जब एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो हम क्या क्या और प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे आई बिलीव कि जो पूरा सेगमेंट है कॉमर्शियल पैड्स का, दैट हैज बिकम एस्पिरेशनल, राइट? एंड there are other products in the market as well, like menstrual cups हो गया, tampons हो गया, हम लोग जो बचपन में पहले यूज करते थे क्लॉथ पैड हो गया। बट क्या हम वो चीज भी लेके आ सकते हैं, नॉट जस्ट फोकस ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल सैनिटरी पैड्स? तो आई थिंक हमें थोड़ा सा अपना जो डिस्कशन है मेंस्ट्रुएशन, मतलब मुझे ये फील होता है कि जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का डिस्कशन है, हमें उस तरीके से शिफ्ट करना चाहिए। इफ नॉट सैनिटरी पैड्स, इफ दैट इज आवर प्रायोरिटी, नेक्स्ट व्हाट? एंड आई बिलीव दैट देयर इज अ लाइक बुफे ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, बट वी जस्ट नीड टू नो दैट हाँ ठीक है, ये सब चीजें भी अवेलेबल है, एंड ये हमारा ही काम है कि हम लोग उन तक पहुंचे कि हाँ दिस आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। क्या कोविड-19 ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ को प्रभावित किया है? बिल्कुल प्रभावित किया है, एक्सेसिबिलिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। मतलब लोगों तक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स पहुंचना मुश्किल हो गया है। सेकंड, जो चीज मुझे काम करते हुए पता चला है कि हम लोग सब इस टाइम पे घर पे रह रहे थे, राइट, बिकॉज ऑफ कोविड-19। पहले डिस्पोजल जो था मेंस्ट्रुअल पैड्स का या फिर
तो घर के लड़के पहले काम करने के लिए चले जाते थे, बट कोविड के टाइम वो लोग भी घर पे थे, तो डिस्पोजल एंड वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स बिकेम अ प्रॉब्लम, कि वॉश करने के बाद हम जो उसको टांगते हैं बाहर आंगन में या फिर बैल्कनीज में, मतलब अर्बन स्पेसेस में हम लोग बैल्कनीज में टांगते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, लड़के घर के जो पापा है या फिर भाई है वो लोग भी घर पे है, तो एक जेन्युइन हिचक होती है कि हम कैसे उसको करें, या फिर हम डिस्पोज कर रहे हैं तो वो लोग देखना ले कि मैं ड्राइंग रूम से जाके किचन वाले डस्टबिन में फेंक रही हूँ, या फिर गांव में मैं आंगन पार करके फिर कहीं और फेंक रही हूँ, कोई पूछ रहा है कि क्या है। तो इन सब चीजों को कोविड-19 ने ऑब्वियसली पहले भी था, बट और ज्यादा बढ़ावा दे दिया है। थैंक यू सुमा जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास। ओवर टू यू मिस्टर शंकर। Thank you, Kishore. My first question is to Dr. Khera. You're a specialist in epidemiological surveillance and outbreak of investigation of communicable diseases. Is there a cycle of such outbreaks in India, and what are the preventable steps that have been taken and can be taken? Outbreaks are there for centuries. Maybe this pandemic has happened after a gap of many years, but epidemics are well known. Every year, I think in India, so many epidemics of common communicable diseases are reported, and there are systems also in place. Now, in order to prevent all those epidemics, there is something called as the epidemiological surveillance. That means you need to detect epidemic early. So detection is the key, because if you can detect early, you can immediately do the investigation and you can institute some control measures. But generally what happens, the epidemics are not detected early. Only when the media comes to know, then people come to know, yes, there is a big epidemic of diarrhea happening, or there is a big epidemic of, respiratory infection or encephalitis. So the key thing is, detecting them early. And in order to detect them early, you need to put so-called the surveillance system in place. There are efforts by Government of India by putting surveillance system in place, but there is always a scope for improvement. But I think in the COVID time, we have been able to establish a very nice epidemiological surveillance system, contact tracing, and even the flights which were coming from outside, even at the airport and the checkpoint, because this was a pandemic, and pandemic implies when epidemics involves many countries. So I think all those public health actions are required. Thank you very much. You're also closely connected with the vaccination for preventable communication diseases. What's your opinion on vaccinating children below 12 years against coronavirus? At this point of time, obviously, if vaccine is available, one must provide the vaccine. But at this point of time, at least in India, we do not have any approved vaccines. But simultaneously, we must also know that if COVID happens to small children, the severity of the disease is very less. They get a very mild disease. So there is no cause of worry under 12. So that's why, government is not pushing. But as soon as the vaccine will be available, it should be provided. Even if it provides, maybe 10% protection, no harm. But at this point of time, I think the priority has to be given to the elderly people, to the people with comorbidities, because here we could find that if COVID infection will happen, the disease severity will be more, they will require hospitalization, and even the deaths can happen. So, from a public health point of view, you have to take a very comprehensive view. What is the priority? So priority at this point of time is we should be able to prevent all deaths. That's number one. We are not finding deaths happening in children. We are not finding children getting hospitalized in large numbers. Yeah. Now, your family planning was much discussed and debated during a topic a few years back. What's the current situation, especially with this COVID lockdown coming in between? The recent NFHS data gives a very kind of a healthy sign of family planning, particularly in the context of population control. And as you know, that something called as the total fertility rate has gone down to 2. That's a very significant achievement which we have been able to make. And even if you look at the unmet need has also reduced,
But at this point of time, in the context of family planning, the priority area is the young population. Because for young people, contraception, unmet need is high. And then this is the population which we need to focus. And the second important point is that family planning should not be equated with the population control. I think those times are over. Now, I think, family planning has to be positioned. It is a kind of a for improving the health of women and the children. And it is also a kind of an instrument for empowering women. It is not only family planning, is population control. So I think repositioning of the family planning is required. And then the contraceptive services should be freely available. People should have no hesitation in going to a facility and collecting contraceptives. So that means, every pregnancy has to be wanted. Every pregnancy has to be safe. If we can ensure this, I think we have done wonderful thing in the area of family planning. But I think that notion of family planning and population control has to be broken. Yeah, that's very right. Thank you, Dr. Kera. I'll come back to you. Now, Dr. Katre, you have wide experience in public health, especially maternal and child health. The UNICEF had some time back said that coronavirus pandemic is also a child rights crisis, as 6,000 additional children could die daily from preventable causes. What's the situation now in India? Currently, because the data like in the data is not available for, but we will like the NFHS 5 data is already released, and further if we go for the NFHS 6 data on that time, you will get the current situation. At this moment, because affect that as per UNICEF report, the additional child death and additional maternal death will be happened in this low income countries that was mentioned. So particularly in related to child health, like the Anganwadi were closed, and that time the SAM screening was not done. At this time also Anganwadi were closed, and they are giving the take home ration and giving this hot cooked meal is not served. So that food is going to that particular child is we are not assured about that. One more thing that like during COVID times, the most of the staffs were busy in the COVID, like RBSK staff who are referring the children who are going to village, and they are checking the child, and they are referring to the NRC. So RBSK staff was more like involved in the COVID duties, so that referral was not done. So this the COVID-19 affect this this screening and identification of the SAM and MAM silent community, and that will affect. But right now the data is not available, but it will affect the infant death and child death will be more. So yeah. Now there is another issue also. According to the National Crimes Records Bureau, also Delhi probably recorded the highest number of infants abandoned in any Indian city between 2015 and 20. The COVID saw that what is now being termed as COVID orphans. Now, my question is, what happens to these hapless children? So can you repeat the question? See, on the one hand, we have cities where we saw high rate of children being abandoned, Delhi, yes. Maharashtra. Now, on the second hand, we have what is called this COVID orphans, where both the parents have died and children are left. Now, my question is, what happens to these children? What is the situation? Like in this Maharashtra, because if you see the data, I think in some like around 100 to 600 child where both parents were died due to the COVID-19, and the number was in 1,000 where the one child one parents were died due to COVID-19. So government has provide like a monetary benefit, or they have provide some services, provide some incentive to this child, in which the both parents were died due to the COVID-19.
Yeah, that's a welcome move. I think the governments should interfere at this particular phase of time. Thank you. I'll come back to you again. Now, my next question is to Ms. Anisha. Ms. Anisha, can you unmute yourself? Yeah. First of all, I'll correct myself. It is not IPAS, it is IPAS. Probably that's the correct pronunciation. Anyway, Anisha, you touched on this particular topic. You are associated with preventing and managing unwanted pregnancies. The MTP Act, which you dealt as a very sensitive issue of 1971, has not so far nullified the penal provisions for women. The law on causing miscarriages continues as is and the punishments remain the same. While the Act protects medical practitioners, it does not give women a choice or autonomy or protection. What is your take of giving women the right to abortion considering the socio-economic milieu of the country? I know it's a very sensitive question, but you can deal with it. Yeah, so of course, as you already said, this is it is a very sensitive topic. It is very controversial because, we have been working, IPAS Development Foundation has been working in India since 2001, right? And we have been working to reduce unsafe abortions and increase access to safe abortions. And one thing we have seen in our approach is that anytime we take the topic of abortion, whether it is to communities, whether it is to policymakers or to healthcare providers, as a woman's right, it is resisted very much. The one big reason, IDF has been successful in implementing and scaling up in what we call our comprehensive abortion care program is because we have taken a health dimension to it. In the sense, what is the impact of unsafe abortions on women's health? And that has been, that has allowed us to make inroads into communities and into, the health system. Having said that, and coming to your question, I think it is absolutely necessary to make abortion available on demand. And that was actually something me, myself, and, I've been involved in the process of amending the MTP Act since 2006. And that was one of the demands that the NGOs, the expert committee had put forward. However, we know that there was huge resistance to it. It was not accepted. The IPC stays as is, which is a cause of deep disturbance. There is a lot of activism. There is a lot of, movement going for it. But it will take its own time, we feel. And I come back to the same point. Yes, the MTP Act has a lot of big misses. This is one big miss. At least for the first trimester, abortion should have been made on demand. So that would have brought in some initiation of a rights-based approach, and that has not happened. But we are still trying to look at the bright side of things and trying to implement the gains or some big steps that the MTP Act has opened for us. But has this has this lacuna in this particular act led to a lot of illegal abortions endangering the life of women? You mean the lacuna of not having it available as a woman's right? Yeah. So I would say, I'm not sure if that is the case. If you go into rural areas, if you go to women, even in urban areas, how many women actually think about a legal abortion, right? How many women? I think more than the legality of abortion, it is the social stigma of abortion that makes women go to unsafe providers and endanger their lives, right? Because right now, and that is very common for us when when we are into communities, especially for young people. If there is a woman who has an unwanted pregnancy, it is the society that is preventing her. It is the attitude, oftentimes, as Kuhika said in the beginning, it is the attitude of the health system that is preventing her from going to a hospital or to a provider. So I think more than that, it's the social network that needs to be worked upon more. My quick question to you is, what are the hurdles in integrating sexual health services into the existing public health infrastructure and national health programs? Right. So, of course, the integration at a conceptual and theoretical level exists, actually, right? We have the entire RKSK program that the country is running, that some states are running very well. We are working with some of the states in doing that. But from policy to implementation, I think that is one big challenge our country faces, whether it is in family planning, and I'm sure Dr. Khera will agree with me, whether it is family planning, whether it is abortion, or whether it is sexual and reproductive health. So one big problem of integration is this topic of sexual and reproductive health. The word sexual and sex and reproduction
If reproduction is somehow, I mean, this whole basket of services is just so controversial, so sensitive, so taboo that becomes the integration becomes a problem there. So it is important to convince the policymakers at that level. It is important to convince the program managers. And then one big challenge is for the people to come in, to get the footfall. So we have RKSK clinics today in many hospitals, in the government hospitals. But I was recently in Jharkhand, and one big problem they say is that teenagers don't want to walk into the RKSK clinic क्योंकि उसको अलग से clinic बना दिया गया है, within the same hospital premises. And as a teenager, I will be stigmatized कि मैं वहाँ क्यों जा रही थी, मैं वहाँ ऐसा क्या पूछने जा रही थी, So that integration has to. So one big challenge is again going back to stigma, and again, so yeah, I think it's again starting from community norms to individual knowledge. A lot of these barriers are there. I feel the change should happen in the mind. Yes, absolutely. Yeah. Thank you very much. My next question is to Ms. Shuma Banik, and you lead Happy Periods organization and has worked extensively on menstrual health, nutrition, and adolescent health. In 2017, a Mumbai-based startup, Cultural Machine, was the first to grant period leave, followed by Malayalam media organization called the Madhrubhumi. Now, 12 organizations have such a policy. What is your take on this? I personally feel that period leaves should be given to women, to menstruators. I shouldn't be saying women, to menstruators, and there can be policies that can be worked around it. Maybe 12 period leaves or a year, or 6 period leaves a year. That can be worked out, but the whole idea is that the counter argument from people what I have heard and on debates, or even through personal conversations, was that you won't be as productive as men then, right? Or non-menstruators. So so we function differently. Our bodies are different. We our hormones are different. Everything is working differently inside my body. If I am taking a day off, which is, and someone who is not menstruating is not taking a day off, that doesn't discount on all the work that I have done in the rest days of my employment, right? So I strongly believe that a day of how many days that can be worked out, how they want to take it, that can be worked out. Even if someone can pass on their period leave to some other menstruating colleague, because maybe I go through pain for one day, and there may be other colleagues who go through pain for 2-3 days, because it's very specific. And also and it depends from person to person, right? And we have several medical conditions, like I have PCOD, someone might have endometriosis, so the intensity differs. So this can be worked out, but what I strongly believe is that every organization should have the culture of period leave. I think this will increase the productivity anyway. It's not going to decrease the productivity. Yeah, Shuma, especially in the background of jobs becoming extremely stressful, I think this period leaves are something that would actually increase the productivity of women who are menstruating. Now, my next question is, how popular are menstrual cups and tampons, and are they safe? They are extremely safe. I like to talk about menstrual cups first. So menstrual cups, it is a blessing. It's a lifesaver for menstruators. And why I say this is, it saves on a lot of money. It is super. So people like us who are working in development sector, who are also going on field very regularly, I think it's a lifesaver for us. So when we are out there on the field all day, and we do not have the scope to change, right? So you can just take out, drop the whatever, and then so you can go on with your day without like a lot of barriers and everything. And also so it's not that common in not even in rural spaces, not even in urban spaces. The problem is people think that they will lose their virginity if they put on the menstrual cup. So the whole
conversation is around hymen and how it might impact their marriage or life with their partners, etc., etc. So and these are all misconceptions. So that's one reason why I feel that menstrual cups has not picked up yet in both rural and urban spaces. Whereas when I was talking to my community folks in tribal blocks of Gujarat, I found their acceptance was higher as compared to my friend circle or my friends who are starting to use menstrual cups. So I think there has been like a few organizations are already doing very good work in terms of menstrual cups, but I think a lot of work need to menstrual health and hygiene work need to be focused on introducing variety of menstrual product and not just stick to commercial pads, which is anyways loaded with plastic and all of those things. So this can basically be it comes down to commercial interest also at the same time, apart from the myth that we have. Yes. Thank you very much. I'll come back to you again. Kuhika, my quick question to you. You work as a gender specialist at the International Center for Research on Women. There has been a steep rise in cases of intimate partner violence and sexual violence globally since 2020. The UN has labeled this as a shadow pandemic and even launched a public awareness campaign to battle the worsening gender inequality and domestic violence in the wake of COVID crisis. What's your take on this? So the data that's come out globally and even for India, so there are different perspectives on it. Some say that that's not the case if you go in pockets and conduct smaller studies around it. Whereas overall, the data does show that that is the shadow pandemic, and there has been an increase in calls on helplines. But the other side is also that because you have your intimate partner who is violent in the house, there is no scope of calling. So how do you even reach out to systems and structures where you would otherwise reach out, your NGOs, your health structures, or even your neighbor who you would go to for help or support? So my take on it is definitely the violence has increased, uh, even though the figures may or may not say so in our larger surveys or smaller qualitative studies. Even then, because you have your quote unquote perpetrator living with you in the house, and with that migration crisis that happened in the beginning of the first wave. So the pandemic also has been experienced in many different ways. The first wave was very different from the second one, and the recent one, the third one, was very different. And people were coping and reeling in a very different manner, so to say. So when all the migrants did come back, we did hear reports of increased alcoholism, a lot of mental stress and duress for both the man and the woman in the household, the children not going to school. I think the household in itself was dealing with a lot of things at the same time, not knowing what this unusual situation would bring all us to. So the women definitely did bore the brunt, as is the case with many other things that we have been discussing about. There has been, we in all our studies that we conducted, of course, remotely during these times, there was an increase in forced sex. There was an increase in sex per se, uh, more violence, physical and verbal, of course, emotional violence as well, not just seeing violence in that one form of hitting. So overall, there was, I would agree that there has been. How much has it been there? The measurability of it, that's still in question, and we still are trying to understand and find that out. Thank you very much. I think we're running short of time. Thank you. It was a wonderful session and a lot of sensitive issues which need the basic underlying message is that the change should happen first in the mind, because there are so many things ingrained in our society. I think that's where the first step towards change would start. I know it's an extremely difficult process, but hopefully the next generation would be able to at least take 2 more steps forward so that we break all the myths and barriers. Thank you. Thank you for being in this wonderful session. We'll come back again. We'll have another session properly on this sensitive topic. Thank you, all the speakers. It was wonderful having you with us. Thank you. Thank you very much. Thank you.
We now move on to quiz number 2. The quiz number 2 is: which of the following are the challenges India faces today concerning sexual and reproductive health? A, unavailability of correct information. B, difficulty in accessing contraception and safe abortion. C, the judgmental attitude of the society. And D, all the above. The answer will be given at the end of the session. We now move on to Health Nama, a popular episode in Hindi put together by my co-anchor Kishore Malviya. नमस्कार। कोरोना का डर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये डर भी सता रहा है कि कहीं ओमिक्रॉन के बाद कोई नया और ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट ना आ जाए। खैर, जब तक आता नहीं हमें डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस बार हमने हेल्थ नामा में फोकस किया है उन लोगों पर जो कोरोना के शिकार हो चुके हैं और ठीक होने के बाद भी किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। हमने अपने साप्ताहिक लाइव शो हेल्थ फॉर ऑल में इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने के लिए देश के जाने माने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था। उन्होंने शरीर के विभिन्न अंगों पर कोरोना के दुष्प्रभाव और उससे बचाव पर हमें जानकारी दी। यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं उनसे किए सवाल जवाब के कुछ ज़रूरी अंश। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और वो दवा लेते हैं और दवा से उसको कंट्रोल में रखते हैं, उन्हें कोविड इन्फेक्शन होता है, तो ये कितना खतरनाक है? जिस पेशेंट को पहले से बीपी है और बीपी की मेडिसिन रेगुलर ले रहा है और वो कंट्रोल चल रहा है, उसको सडनली पता चलता है कि कोविड है, फीवर है। उस फीवर में अर्ली स्टेज जो रहती है, जिस टाइम पे फेब्राइल इलनेस स्टार्ट है, उस टाइम पे ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएट टू द लोअर साइड। तो जो पेशेंट ऑलरेडी बीपी की दवाइयां ले रहा है, उसको कोविड इन्फेक्शन हुआ अर्ली स्टेज में, तो बीपी मॉनिटरिंग इज द फर्स्ट पॉइंट. If required, the BP medicine dose should be reduced in the early phase, and after that, when the recovery starts, then again the blood pressure may shoot over the level which is he prevented by the same medicine. Then that time may require the increased dose of the medicine. कोविड इन्फेक्शन के बाद बहुत से लोगों में देखा गया है, शिकायत हुई है कि सिर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, मसल पेन है, जॉइंट पेन है, चेस्ट पेन है, कईयों में तो ये भी देखा गया है। क्या ये कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी और वजह से है, और इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, ये कोविड से रिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर ये किसी और विटामिन डेफिशिएंसी से भी हो सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर प्रशांत सक्सेना भी बोल रहे थे कि अगर उनको विटामिन डेफिशिएंसीज है और वो सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, तो उसके बाद में उनकी सिम्टम्स वगैरह या वीकनेस ये सब काफ़ी कम हो जाता है। इनफैक्ट अगर हम ये देखें, हम लोग कई बार जब ये पेशेंट्स आते हैं और उसमें हम सीरम विटामिन B12 कराते हैं, तो वो बहुत ही कम पाया गया है। और इंडिया में तो हमें पता ही है कि डिस्पाइट द सनलाइट बहुत सारे पेशेंट्स में विटामिन D डेफिशिएंसी है। सो करेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग डेफिशिएंसीज विटामिन D, विटामिन B12 करके हम ये सारे सिम्टम्स काफी हद तक ही कंट्रोल किए जा सकते हैं। कोविड डायबिटीज जो टर्म बना है कि कोविड इन्फेक्शन होने के बाद उनको डायबिटीज हो जाता है, तो क्या ये परमानेंट होता है, उनको मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा या ये समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है? सर, इसके अंदर ये है कि मॉनिटर करते रहना चाहिए। परमानेंट है या वो टेम्पररी है, इसको स्पेकुलेट करे के बिना आप मॉनिटर करते रहिए। अगर लग रहा है कि डायबिटीज आपका कंट्रोल आ रहा है, शुगर नीचे होने लग रहा है, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपका शुगर फॉल हो रहा है, तो उस केस के अंदर दवाइयाँ आपको कम करके मॉनिटर अपना चालू रखना चाहिए। आप डायबिटीज की दवाइयाँ कम कर दीजिए, शुगर मॉनिटरिंग कीजिए, उसके बाद कई चीजों में रिवर्ट हो जाता है। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है और वो
नियंत्रण में है, वो एक्सरसाइज करते हैं और सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, नियंत्रण में है, और उनको कोविड इन्फेक्शन होता है, तो वो कितना फैटल होता है? टाइप 2 डायबिटीज अगर नियंत्रण में है तो जनरली वो कंडीशन जिस कंडीशंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज नियंत्रण के बाहर जाती है, जैसे कि मोटापा, स्ट्रेस, अनबैलेंस लाइफस्टाइल, तो नियंत्रण में अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो इसका ये मतलब है कि उस आदमी का स्ट्रेस लेवल मोस्टली कंट्रोल में है, वो आदमी मोटापे से थोड़ा सा दूर है, उसका बाकी न्यूट्रिशन वगैरह ठीक चल रहा है। इन कंडीशंस के अंदर अगर HbA1c जो हम मॉनिटर करते हैं, जो कि डायबिटीज के बारे में बताता है कि वो वेल कंट्रोल्ड है कि नहीं है, 6.5 के ऊपर जैसे HbA1c होता है तो उसको डायबिटीज होता है, अगर 8 के नीचे HbA1c है तो कंट्रोल बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर टाइप 2 डायबिटीज का कंट्रोल अच्छा चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि कोविड के सिवियरिटी वगैरह उन मरीजों में देखी जाए। कई मरीजों में ये देखा गया है कि ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज नहीं होती। ऐसा क्यों? क्या ये सच है या ये एक दो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस? नहीं, होता है, कई केसेस में ऐसा होता है कि ओमिक्रॉन के बाद एंटीबॉडीज तैयार नहीं होती है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिकली इवन आफ्टर वैक्सीन, कभी वैक्सीन लेने के बाद भी एंटीबॉडीज तैयार नहीं होती है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप फिलहाल जैसे आप रूटीन जो कर रहे हैं आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटीबॉडीज की टेंशन मत लीजिए। हालांकि एंटीबॉडीज सब लोग जो टेस्ट करते हैं वो सिर्फ साधारण एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं। वी रिक्वायर टू चेक आवर स्पाइक एंटीबॉडीज। They are different kind of spike protein antibodies which we called, and you just require to focus them. If you have those spike protein antibodies, then there is nothing to worry. Okay? हम जो एंटीबॉडीज जो पूछते हैं लैब में, हम सिर्फ जाके पूछते हैं कि आपको एंटीबॉडीज चेक कराना है कोविड का, वैसे नहीं होता है। वो स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज एक दूसरी होती है और यूजुअली वो पाई जाती है। आज के हेल्थनामा में इतना ही। शरीर की अलग अलग समस्याओं पर बड़े बड़े डॉक्टरों की राय जानने के लिए आप YouTube के हील टीवी चैनल पर सारे वीडियो देख सकते हैं। विस्तार से चर्चा को देखने सुनने के लिए हेल्थ फाउंडेशन के वीकली लाइव शो हेल्थ फॉर ऑल आप हर रविवार सुबह 8 से 11 बजे YouTube और Facebook पर देख सकते हैं लाइव। अपना ख्याल रखिए और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनिए। नमस्कार। We now have the answers to the two quizzes that we had asked earlier. Let's have quiz number 1. Yeah, quiz number 1. The question was, which of the following yoga poses are especially beneficial for the management of PCOS? And the correct answer is D, which all the three above poses are good for controlling PCOS. The second quiz was on which of the following are the challenges India faces today concerning sexual and reproductive health. The correct answer again is all the above: unavailability of correct information, difficulty in accessing contraception, the judgmental attitude of the society. So that's the answer, and those who have answered the quiz correctly will get a participation certificate. Thank you, and over to you, Kishore. Thank you. तो आज के एपिसोड में इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के विशेषज्ञों ने आपके सारे भ्रम दूर कर दिए होंगे। तो कान में फुसफुसाने के बजाय सेक्सुअल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करिए और देश की एक बड़ी समस्या को दूर भगाइए। अब हमें आज्ञा दीजिए। जाने से पहले हम हिल फाउंडेशन की तरफ से अपने सभी गेस्ट का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें जागरूक बनाने की कोशिश की। हम अपने दर्शकों का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले रविवार को हम फिर सुबह 8 बजे से आपसे मुखातिब होंगे कुछ नए और बड़े विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।